Hi everyone, welcome to the new series of इंटरव्यू कैसे फोड़े और इंटरव्यू कैसे क्रैक कराए। वेल इस पे बहुत बातें हो सकती हैं, बहुत तरीके से बातें हो सकती हैं। केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे करना चाहिए, क्वेश्चंस कौन से आंसर करने चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। राइट अमर? बहुत सारी। है ना? और इसमें सिर्फ ये कि कैसे रिस्पॉन्ड करने की बात नहीं है, मेन ये हो जाता है इंटरव्यूज में कि कैसे सोच के और रिस्पॉन्ड करो। ये एक ट्रिक है, क्योंकि बहुत ऑफन ये हो जाता है कि जल्दी जल्दी में हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो एक तो हाँ, लैंग्वेज टूट जाता है और दूसरा सोच टूट जाता है। तो टाइम करेक्ट। लगा के नोट्स बना के सोच के रिस्पॉन्ड करो। इसका एक एडवांटेज है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। हम लोग ये सब बारे में बातें करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का थोड़ा मॉक करेंगे, थोड़ा अमर आंसर करेंगे, थोड़ा मैं आंसर करूंगा। Uh, इस सीरीज में राइट नाउ वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन सम क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल इंटरव्यू से पूछे गए थे। किस कंपनी पूछे गए थे मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये वो कंपनी है जिसमें आपको जाने की ना सबसे ज्यादा तलब होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप टियर कंपनीज इन द एंटायर वर्ल्ड। उन कंपनीज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड ये वैसे ही डिस्कशंस कुछ होंगे। What are you going to expect in this? What you can expect in this entire conversation is very honest, very direct responses, as close as possible to the real world situation. The questions are always going to be real, जो actually पूछे गए हैं, made up नहीं है। And हमारा तरीका of answering, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा तरीका परफेक्ट है और हम लोग जो आंसर देंगे एब्सोल्यूट 100% परफेक्ट है, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में उसका कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर होता नहीं है। बट रादर इट इज मच मोर अबाउट हाउ यू आर स्ट्रक्चरिंग योर आंसर। कैसे आप आंसर स्ट्रक्चर करके एक ऐसी कहानी बता रहे हो जो कि आपके रिक्रूटर को समझ में आनी चाहिए, जो आपसे पूछ रहा है उसको समझ में आना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए। बाकी चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है? सो वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर अस। वी आर गोइंग टू डू एक अस। चीज मैं बस ऐड करूंगा बिफोर वी हाँ जी, स्टार्ट। हाँ जी। तलविंदर ने रिक्रूटर बोला। अब ये जरूर याद रखिएगा, व्हाट तलविंदर इज रेफरिंग टू इज द हायरिंग मैनेजर, द एक्चुअल इंटरव्यू। एचआर का जो एक इनिशियल इंटरव्यू होता है वो बहुत बेसिक लेवल होता है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन योर फील्ड दैट यू आर अप्लाइंग टू। बट हाँ, बड़ी कंपनियों में ये जरूर है कि दे नो। सो इट वुड बी बेस्ट इवन फॉर एचआर इंटरव्यूज जो अगर पहले हुए हैं, सोच समझ के रिस्पॉन्स करिएगा। कि मैं वो क्या पूछ रहे हैं, मेरे से क्या चाहते हैं, और रिस्पॉन्ड उस तरीके से करिए। बिल्कुल। आई थिंक ये थोड़ा जरूरी है एक बार बिफोर वी गेट स्टार्टेड। ये डिफरेंस बिटवीन एचआर, हायरिंग मैनेजर एंड रिक्रूटर, हाँ जी। ये तीनों, ये जो कौन से स्पीशीज हैं, ये क्या हैं? आप अमर। मैं बताऊं, अच्छा हम्म, ठीक है। तो देखिए, एक है, मैं रिक्रूटर और एचआर में फर्क मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा। रिक्रूटर आपका टैलेंट एक्विजिशन वाली टीम होती है जनरली कंपनीज हम्म, में, हु हम्म, विल रीच आउट टू यू इनिशियली। समझे, आपने अप्लाई किया, आपका रेज्यूमे एक सिस्टम में चला गया। वो सिस्टम, या तो अगर आप एटीएस है सिस्टम में, एटीएस मीनिंग एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो मैंने थोड़ी बहुत बात की है चैट जीपीटी में और तलविंदर ने बात की है ब्रेकिंग इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, आ, उसके थ्रू समझो आपका पास हो गया। फिर आता है एक रिक्रूटर के हाथ। वो रिक्रूटर रिव्यू करता है, मे बी इन टूडेज डे एंड एज वेयर मे बी 1,000 रेज्यूमेज इन अ डे। तो लिटरली वो रेज्यूमे का फर्स्ट 2-3 लाइंस और आपके 2-3 बुलेट पॉइंट्स वो पढ़ के बता देगा या बता देगी कि भाई मेरे को इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। और ये समझ लो, रिक्रूटर आज के दुनिया में, पहले इतना नहीं सोचते थे, आज के दुनिया में 10 बार सोचेंगे बिफोर पासिंग इट ऑन टू हायरिंग करेक्ट, मैनेजर। क्योंकि अगर गलत रेज्यूमे पास ऑन किया तो उनको रिस्क हो जाता है। करेक्ट। इसलिए रेफरल्स भी आजकल बहुत ही केयरफुली लोग डाल रहे बहुत हैं। सोच समझ के हो रहा है, बहुत बिकॉज सोच समझ हायरिंग के। नहीं हो रही है। हायरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, लोग, क्योंकि कंपनीज आर लुकिंग एट प्रॉफिटेबिलिटी। So, एब्सोल्युटली। so just to add to few points, so recruiter can be internal, can be external, यानी कि कंपनी जो है वो किसी एक्सटर्नल रिक्रूटर को हायर कर सकती है पार्ट टाइम फ्रीलांस बेसिस पे कि भाई ये जॉब, ये रोल है, इसको भरवा दो। एंड देन दैट रिक्रूटर इज गोइंग टू सोर्स लीड्स, गोइंग टू सोर्स पीपल
जो कि उस जॉब के लिए सुटेबल है, विच इज वाई एक्चुअली रिक्रूटर्स के सर्कल में रहना बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, लिंक्डइन पे सिर्फ आप लोगों के ज्ञानवर्धक बातें मत सुनो, रिक्रूटर्स खोजो, रिक्रूटर्स के टच में रहो, क्योंकि वो है जो जॉब एक्चुअली पोस्ट कर रहे होंगे। और एब्सोल्युटली। वो जॉब्स आपको ना किसी जॉब बोर्ड पे भी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके से सबसे पहले होती हैं, और वो लिंक्डइन वगैरह पे भी तब डालते हैं जब उनको अपने खुद के पर्सनल डेटाबेस से नहीं मिल रहा है कोई। ठीक है, सो वो हो गया रिक्रूटर, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। एक्सटर्नल पर मैं एक चीज ऐड करूंगा, ट्रस्ट मी, एक्सटर्नल रिक्रूटर्स का अगर आपका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हम्म। बहुत बड़ी बात हो जाती है। करेक्ट। क्योंकि इट इज ऑनेस्टली समटाइम्स आई फील एटलीस्ट टफर टू गेट एक्सटर्नल रिक्रूटर्स ऑन योर साइड एंड रेगुलरली इन टच विद यू वर्सेस इंटरनल रिक्रूटर्स जिन जो ऑलरेडी सिस्टम में है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रिक्रूटर्स के पास पूरी दुनिया बैठी, करेक्ट। राइट? उनका खुद का नेटवर्क है। तो अगर आप कम्युनिटीज में घुस रहे हो, सिर्फ एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी में मत अपना थोड़ा एंट्री मारिए। तलविंदर जो बोल रहे हैं एकदम सही है, रिक्रूटर कम्युनिटी में भी एंट्री मारिए, कम्युनिटी मैनेजर्स का जो एक कम्युनिटी होता है उसमें भी एंट्री मारिए, क्योंकि मतलब ये अब सोच लो, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल रिक्रूटर्स होते हैं ना, जो फ्रीलांसर होते हैं यूजुअली, थिंक ऑफ देम एज टैलेंट मैनेजर्स। जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टैलेंट मैनेजर्स, जो कि आपके एपी ढिल्लों और आपके दिलजीत दोसांझ ना, पंजाबी में यार मैं कुछ आई कांट हेल्प, बट मेरे दिमाग में ये दो यही दो लोग आते हैं। तो इनको जो मैनेज करते हैं कहाँ पे शो होगा, कहाँ पे किधर जाना है, बस वैसा सोच लो कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट मैनेजर्स, सॉरी एक्सटर्नल रिक्रूटर्स, अगर को आप पसंद आ गए डिस्पाइट ऑल द क्राउड ऑफ पीपल दैट दे हैव, देन दे विल फिगर आउट वेयर टू सेल यू, यस, बिकॉज उनके लिए आप एक प्रोडक्ट हो, और आपकी सैलरी जो है वो उनकी मार्जिन है ना, एक महीने की सैलरी उनकी मार्जिन है। तो आप, तो दे विल ट्राई टू सेल यू इन द मोस्ट क्रेडिबल वे, द मोस्ट, एंड फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको चल मारना है। तो यू ऑफ कोर्स हैव टू शाइन इन द इंटरव्यू, बट रिलेटिवली इट बिकम्स इजियर फॉर यू। ये थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा टिप बता रहा हूँ। ये काफी लोग सोचते नहीं है, काफी लोग, मोस्ट पीपल एक्चुअली एंड अप doing exactly what everybody else does, and then आप इंटरव्यू में अपने रेज्यूमे में लिखते हो, ओ आई एम नोन फॉर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, आई एम नोन फॉर ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आप खुद अपने एप्लीकेशन में दिमाग नहीं लगाते हो कि जिस जॉब में ऑलरेडी 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, मैं उसमें 501 बन के स्टैंड आउट कर जाऊंगा, नहीं हो पाओगे, नॉट बिकॉज यू आर नॉट वर्थ स्टैंडिंग आउट, बट प्रोबेबिलिटी इज नॉट ऑन योर साइड, स्टैट्स आर नॉट ऑन योर साइड, सो यू हैव टू इंप्रूव योर ऑड्स, है ना। राइट। सो सो ऑड्स का बहुत सिंपल है, ये आप सोचिए, अगर एक जगह आपको एंट्री मारनी है, वहां पर 10 दरवाजे हैं, अब आपके ऊपर है, आप एक ही दरवाजे पर खटखटाते रहो या 10 दरवाजे पर अपना नोटिस भेजो कि भाई लवली, खोलो मैं आ गया हूँ। वो आप। लवली, ग्रेट ग्रेट मेटाफर है, विजुअली वेरी नाइस। सो ये हो गया रिक्रूटर की कहानी। अब ये रिक्रूटर जो है, वंस दे हैव सोर्स्ड लीड्स, सोर्स सम गुड कैंडिडेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, देन दे विल पास दैट ऑन टू द इंटरनल हायरिंग मैनेजर। अब ये हायरिंग मैनेजर की जो स्पीशीज है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ हायरिंग मैनेजर्स जो है वो एचआर टीम्स के अंदर बैठते हैं, और कुछ हायरिंग मैनेजर्स जो होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट में हायरिंग हो रही है, तो किसी सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर या किसी वीपी को भी हायरिंग मैनेजर बना दिया जाता है, जो कि उस जॉब का, उस रोल के लिए हायरिंग मैनेजर है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ऑफ कंडक्टिंग द एंटायर थिंग अराउंड। ठीक है, वो भी होता है, ये दोनों चीजें होती हैं। यूजुअली नाउ प्रैक्टिस ये हो चुकी है, बिकॉज बे एरिया में यही होता है, तो इंडिया की प्रैक्टिस भी हो चुकी है, एटलीस्ट इन द सीनियर मेच्योर कंपनी, सब कंपनीज में नहीं है, सीनियर मेच्योर कंपनीज में ये है कि द हायरिंग मैनेजर विल बी द एसपीएम और जीपीएम और वीपी, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा थ्रू द एंटायर प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिसीजन फाइनल है, इसका सिंपली मतलब है कि ही इज इंश्योरिंग कि जो राउंड्स हो रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली कलेक्टिवली सब कुछ पूछ रहे हैं जो कि इस जॉब के लिए जरूरी था। ये ना हो रहा हो कि सारे क्वेश्चंस जो थे वो टेक्निकल पूछ लिए गए, स्ट्रेटेजी एंड कल्चर फिट के बारे में पूछा नहीं गया। तो हायरिंग मैनेजर का काम ये होता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ही आल्सो हेल्प्स इन टाई ब्रेकिंग, कि अगर दो कैंडिडेट सबको अच्छे लग रहे हैं तो किसको हायर करना चाहिए, तो वो सब चीजों में हेल्प करता है। एंड देन यू हैव एचआर। ट्रेडिशनली हमारे दिमाग में होता है कि एचआर इज द मेन पर्सन एंड दैट इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग। एक्चुअली नॉट।
वो सोच लो कि वो कंडक्टर है, वो एचआर की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, बट उसका डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। एचआर स्टार्टिंग में पूछेगा आपसे क्वेश्चंस जस्ट टू चेक कि आप क्वालिफाई कर रहे हो इस जॉब के प्राइमरी चीज, सैलरी रेंज सही है कि नहीं, लोकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीजें पूछेगा। एंड लास्ट में जब वो कल्चर फिट की बारी आएगी तो वो पूछेगा। ये दो चीजें करता है, बाकी इंटरनल कोऑर्डिनेशन में एचआर हेल्प्स। अमर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग टू तलविंदर जो बोल रहे हैं। तलविंदर ने एक पॉइंट यहाँ पर पॉइंट किया कि कोऑर्डिनेशन बाय हायरिंग मैनेजर, राइट। वेरी ऑफन ये मैंने बहुत देखा है, स्पेशली जैसे कंपनी थोड़ी बड़ी होती जाती है, वेर यूर अप्लाई, राइट। छोटी कंपनीज, मिडिल कंपनीज, लार्जर कंपनीज वगैरह, एज द स्केल ऑफ द कंपनी थोड़ी बड़ी होती है, आपको जो एक डेली एक्चुअल कोऑर्डिनेशन होगा मे नॉट बी विद दिस पर्सन, वो हम्म। आपकी टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटर के साथ ही ज्यादातर होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, द हायरिंग मैनेजर इज कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर पीपल हु आर डूइंग द इंटरव्यू टू बी एबल टू कलेक्ट ऑल द पॉइंट्स, बट आपका इंटरेक्शन उनके साथ डायरेक्टली ज्यादातर नहीं होता है, इज माई एक्सपीरियंस विद द लार्जर कंपनीज। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज टू क्रिएट a little bit of buffer between the candidate who's not yet joined and the and the team, right? तो मैं ये क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बहुत फ्रेशर्स या जो लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो ये थोड़ा समझ ये सेटअप से फेमिलियर नहीं है, उनको बुरा लग जाता है। और जब मैं रिक्रूटर्स, काफी रिक्रूटर्स से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं कि मैं हम कैसे समझाएं कैंडिडेट्स को, हम्म। ये आर द फ्रंट फेस, राइट। the hiring managers coordinate with us. हम्म। I can only give you updates basis hiring manager and remaining team members updates. राइट। And you have to understand कि वो जो remaining हैं, जो hiring managers हैं या बाकी हैं, they are interviewing not only you. There are so many other people. करेक्ट। So patience, especially in today's market, मैं बस ये I just want to end with this कि is very important to keep. Right? एब्सोल्युटली। Does not mean you don't be in touch. There are many rules out there, some say 48-hour rule, 1 week rule वगैरह वगैरह, मैं वो सब साइड कर रहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ पेशेंस एंड हम्म। मेक योर डिसीजन बेसिस सेंस। एक आ जाएगा कि भाई यहाँ से आने वाला है या मैं आगे बढ़ूं, आप अपने इंटरव्यूज करते जाओ, आप मत रुको। करेक्ट दैट इज करेक्ट 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 दैट इज करेक्ट। आई थिंक we will I think do the mock in the next class, in the next session. So today let's just utilize the next 15 minutes or that we have on few more such similar tips before we get into details, huh? So um, one thing that I typically talk a lot about, especially for people who are just starting to interview, is कि यार इंटरव्यूइंग करना और किसी चीज को बेचना में फर्क नहीं है। हम्म किसी चीज को बेचने के लिए आपको फनल बनाने पड़ते हैं। हम्म आप 10 लोग, जैसे हमने बोला 10 लोग को बोलोगे तो एक बंदा खरीदेगा, दो बंदा खरीदेगा, है ना, उससे पहले लोग नहीं खरीदेंगे। दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, राइट। वो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही काम करती है, स्टैट्स ऐसे ही काम करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अब लेकिन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में बड़े फनी चीज है। समझ गए तो पार हो जाओगे, और नहीं समझे तो फिर सिर्फ गालियां देते रहोगे। अब वो जो 10 लोगों के दरवाजे खटखटाने हैं ना, वो कौन है? अगर वो रैंडम लोग हैं तो 10 नहीं, आपको 100 लग जाएंगे जिनका कोई अलाइनमेंट नहीं है। आप अगर टेकी हो, आप डेवलपर हो, जाके आप किसी चप्पल की दुकान में जाकर ठकठकाओगे, नहीं काम करेगा ना। मतलब मैं बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जस्ट टू इलस्ट्रेट माय पॉइंट, नहीं काम करेगा। सो यू हैव टू पिक द डोर्स, but then you do not have to keep the number of doors very small. You can keep it very large, and that's the beauty of today's day and age. बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल, सब लोग क्या करते हैं, थिंक अबाउट, मतलब मेरे हिसाब से ना सबसे आसान तरीका, अगर आपको कुछ अलग करना है ना, जो सब लोग कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट उल्टा लिख, उल्टा सोचो। सब क्या करते हैं, लिंक्डइन में जॉब देखी, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दैट इज, एंड जो रिक्रूटर है ना, जैसे अगर मैं बंदा बैठा हूँ साइड में, मुझे पता दिस इज द लोएस्ट एफर्ट थिंग दैट वन कैन डू।
ठीक है, इट डजंट मीन दैट आई विल नॉट लुक इनटू दोस लिंक्डइन प्रोफाइल, बट गिवन दैट 200 500 1000 तो ऐसे ही मिल जाते हैं, लिंक्डइन अपने एल्गो के हिसाब से मैच करा देता है, so it becomes very hard, मतलब it becomes impossible for somebody like me to go through, जो लिंक्डइन ने भी 200 अगर शॉर्ट प्लेस करके दे दी ना 1000 में से, उनके थ्रू जाना बड़ा फाइटर हो जाता है, कैसे करेंगे, कैसे खोजेंगे, क्या समझेंगे, बहुत मेहनत का काम हो जाता है। यहीं पे अगर साथ ही साथ कोई बंदे ने मेरे को ना मैसेज किया लिंक्डइन पे, that automatically captures my eye, and then I look for that person in that entire list कि this person is seriously invested, है ना, seriously invested in this job, which is a great thing for me, right? इसको मैं टाइम लगा सकता हूँ इस बंदे के ऊपर, इसने सिर्फ लोएस्ट एफर्ट नहीं किया, थोड़ा सा उसके ऊपर वाला एफर्ट किया है। अब इसका एकदम काउंटर वाला चीज भी आप ले सकते हो, एकदम काउंटर, वो ये है कि क्या चीज कोई नहीं कर रहा होगा। अमर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल पीपल नॉट बी डूइंग? सब लोग लिंक्डइन पे डाल देते हैं या इंडीड naukri.com के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। मेरे हिसाब से ना बहुत कम लोग और ये अभी रिसेंट जो मार्केट हो रहा है, इट्स रिमाइंडिंग मी अ लिटिल बिट ऑफ कोविड का मार्केट, राइट? एंड आई टेल यू द सिमिलैरिटी व्हाई। कोविड में कुछ लोगों ने मैंने देखा एक ट्रिक समझ गए थे, हम्म सिर्फ पुश फैक्टर से नहीं चलता, हम्म हम्म आपको पुल फैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। हम्म मतलब क्या कि पुश हुआ, आपने मैसेज डाला, समझो इन मेल ऑन लिंक्डइन, मे बी हम्म आपने ईमेल भी डाल दिया, एज नॉट मेनी पीपल डू, बट एप्लीकेशन डाल के एक ईमेल भी डाल दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम का ट्रिक करके @company-name.com करके भेज दिया। हम्म मगर एंड दिस इज माई लर्निंग ऑल्सो, राइट, ओवर टाइम, हम्म कि अगर आप अपना एक प्रेजेंस बनाओ लिंक्डइन पर, फॉर एग्जाम्पल, राइट, हम्म या ब्लॉग करना शुरू करो और उसको लिंक्डइन पर डालो, या यूट्यूब पर बात करो, या वॉट एवर इट बी, एक अपना प्रेजेंस बनाओ हम्म कि अमर कौन है, तलविंदर कौन है, राहुल कौन है, एकता कौन है, श्वेता कौन है। दैट गोज अ लॉन्ग वे, मीनिंग, so I know the most brilliant people from the biggest companies, be it a Google or Amazon or whatever, या Facebook also, and they've lost jobs, and that is the reality of today's world, right? COVID time and now. करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया कि देखो, हमको जॉब, हम जाएंगे, मिल जाएगा, कंपनी फाउंड करना है, कर लेंगे। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर पोर्टफोलियोज एंड ब्रांड। तो ये राइट। एक इम्पोर्टेंट है, आप एक प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आई थिंक पीपल फॉरगेट, एंड दैट्स अ पुल करेक्ट। फैक्टर। सो आई नो पीपल हु पोस्टेड many, like, day on day UX audits of apps around the world, करेक्ट। and they are today working in some of the biggest companies in the world. Why? Because simply on their, लिटरली उन्होंने एक ऐप को लिया, बोला कि ये चेंज करो, ये इफेक्ट होगा वगैरह, कंपनी ने बोला बहुत ही बढ़िया, इंटरव्यू के लिए आ जाओ, बस। एग्जैक्टली राइट, ये चीज इसको बाय द वे कंपनीज भी करती हैं, इसको बोलते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग एंड इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग में आउटबाउंड एक्टिविटीज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, एड चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और इनबाउंड में आप ऐसा कंटेंट जनरेट कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपके पास आना चाहेंगे। ये जो टर्म है इनबाउंड मार्केटिंग, ये हबस्पॉट करके कंपनी है, उसने इंट्रोड्यूस किया था, अपने एक इंडियन ब्रदर ही है, पता नहीं ब्रदर बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए काफी सही कंपनी है, बहुत सही कंपनी है। हबस्पॉट इज अ फैंटास्टिक कंपनी, फैंटास्टिक मॉडल, लेकिन उसको बोलते हैं एकदम हार्डकोर की, गो अगेंस्ट द ग्रेन एंड बिल्ड समथिंग व्हिच इज लॉजिकली करेक्ट, लॉजिकली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड देन दे स्टक टू इट, बहुत सही काम किया। सो एनीवे, सिमिलरली जब आपको जॉब खोजनी है, जो सब लोग करें वो आउटबाउंड है, मुझे जॉब चाहिए, ये मेरा रेज्यूमे, ये मेरा जॉब चाहिए, ये मेरा रेज्यूमे, रेज्यूमे एकदम बट रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हो, टैलेंटेड हो आप, बट लोगों को पता कैसे चलेगा, और स्पेशली इन द क्राउड, इतनी जनता में, हाउ हाउ विल पीपल नो कि आपकी यूएसपी है? तो या तो रिक्रूटर को पकड़ो, जो बहुत कम लोग करते हैं, विच अगर इफ दैट वर्क्स आउट, ग्रेट, नथिंग लाइक इट, ठीक है। सेकेंड इज टू स्टैंड आउट, जो
मिनिमम एफर्ट है, उसके उससे ऊपर उठो। ठीक है, उससे ऊपर उठो। ईमेल कर दो या ईमेल कर दो। अब ईमेल किसको करोगे? आप फाउंडर को रीच आउट कर सकते हो, फाउंडर को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। फाउंडर्स को खोजना उतना मुश्किल काम नहीं होता आजकल। सब कंपनीज का जो टेम्पलेट है फाउंडर्स का, वो है फाउंडर्स, प्लूरल फाउंडर्स एट कंपनी डोमेन नेम। मोस्ट कंपनीज यही होता है। अगर ये भी नहीं करना है या फिर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी कंपनी में नहीं काम कर रहा है, तो फिर एक और तरीका होता है, विच इज देयर आर डेटाबेसेस जिसमें आपको कंपनी के फाउंडर्स के ईमेल मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स अभी कौन सी कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी की बात करो तो फाउंडर्स को भेजने से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो देखेंगे नहीं आपकी ईमेल। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मिड टीयर कंपनीज। ठीक है, बट यू नेवर नो, राइट? यू लूज ऑल द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। सो इट्स बेस्ट टू ड्रॉप एन ईमेल। पहुंच गया, हिट हो गया तो हिट हो गया, नहीं हिट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। बट दिस आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड एडिशनली व्हाट जो अमर ने बोला, दैट हेल्प्स यू स्टैंड आउट। ठीक है, जहां पे आप इनबाउंड जनरेट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ। नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ। ठीक है, वो अपने आप में आजकल गालियां हो चुकी है। नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आपके बारे में सर्च करे, या अब जब रिक्रूटर को आप रीच आउट कर रहे हो, तो रेज्यूमे के अलावा कुछ तो दो उसको, जिससे कि उसे कॉन्फिडेंस मिले कि अच्छा, इससे बात कर सकते हैं। एक रेज्यूमे तो एक सिंपल ए4 शीट है, which may not give very comprehensive idea of कि how smart Amar is, for example। लेकिन अगर यहीं पर अमर बोले कि देखो ये मेरा रेज्यूमे है, बाकी मैं इन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ, अब जरा यहाँ जाके देख लीजिए। एंड व्हेन यू click and you land up on amardang.com, for example, I'm not sure if that domain actually exists। It does, but it's not live yet. अच्छा। सो अगर आप amardang.com पे लैंड करोगे, तो ये मैं सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज सेल्फ। मैं तो रैंडमली बोल रहा था। सो इफ यू लैंड अप ऑन amardang and you discover that, oh, this guy has spoken about a lot of very comprehensive good stuff, जो चीज इनको 5 राउंड 3 राउंड के बाद डिस्कवर करने वाले थे, वो एक बंदे ने ऑलरेडी लिख के दे दिया है। एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द रिक्रूटर। जो अमर पहले भी बोल रहे थे कि इफ द रिक्रूटर इज कन्विंस्ड, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, ये बंदा काम का है, ये माल बिकेगा। सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, बट उनके दिमाग में यही चलता है, हाँ, ये माल बेच सकते हैं अपन। इफ दे गेट दैट कॉन्फिडेंस, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो थ्रू, है ना? ऑफ कोर्स यू हैव टू शो अप इन द इंटरव्यूज एंड यू टू डू इट वेल, बट स्टिल you will you will discover gates that you never knew existed। you will discover those jobs जो कि सुपर लुक्रेटिव है, लेकिन किसी और को मिलेंगी भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, और उससे पहले भर जाएंगे। राइट, आई हैव बीन इनटू सच अ लॉट ऑफ सच डिस्कशंस विद अ लॉट ऑफ top of the top companies in the country, and I would not have been sitting in those rooms अगर कोई रिक्रूटर मेरे पीछे नहीं पड़ा होता। रिक्रूटर पड़ा, उसने he opened doors for me, and I had no idea that those companies were hiring for such amazing roles। So I'll add one thing here, and it's a little trick or tip for people जो सारा टाइम सिर्फ लिंक्डइन पर रहते हैं या आई एम जॉब्स या नौकरी पर रहते हम्म। हैं। एंड ये मैंने रिक्रूटर्स से समझा और फाउंडर्स से बात करके आई अंडरस्टूड वंस हम्म। आई हैड दैट फुट इन द डोर। एक, ये सारे आजकल ऑटोमेटेड हो गए। नाउ व्हाट डू आई हम्म। मीन? हम्म। एक पोस्ट आ गया कि ये रोल अवेलेबल है, हम्म। वो बार बार वो पोस्ट 2 दिन के लिए लाइव होके बंद हो जाता है, 2 दिन के लिए लाइव होके बंद हो जाता है, नया पोस्ट आ जाता है, नया पोस्ट आ जाता है, नया पोस्ट आ जाता है। A lot of companies don't even know that the same role is again going in circulation. करेक्ट। There are roles which are on some of the biggest companies' websites. I'm not taking their names, but हम्म। you go and apply, and the application goes through. And later on, when you get in touch with someone, you realize that these roles are no longer present. हम्म। And these are, I'm talking about literally the biggest companies in the world, bhi ye hota hai, करेक्ट। right? So now why am I talking about this? This is where it's very important, जो तलविंदर और मैं बार बार बोल रहे हैं, आपका कोई एक कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको बिल्ड करना पड़ेगा, जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं इन सम फॉर्म और द अदर।
हम्म Because there are many catch-22 situations like this one I gave, without which अगर कोई नहीं है वो आप फिर शायद घूमते रहो. हम्म That is one another reason कि भाई वो 10 दरवाजे जो हैं खटखटा देखो. अब वो एक्चुअली 100 दरवाजे होंगे पहले, जैसे तलविंदर बोल रहे हैं, आप डिसाइड करो कौन से 10 दरवाजों पर कर. वो रिसर्च आपके हाथ, और वो रिसर्च करना होगा टू गेट व्हाट यू वांट. करेक्ट. अगर आप रैंडमली हर किसी को लंगर की तरह सबको रेज्यूमे देते जाओगे ना, तो नहीं, उसको स्प्रे एंड प्रे बोलते हैं. वो वही है, स्प्रे एंड प्रे ही है कि मालिक तेरे बंदे हम, वो चलता रहेगा. दैट डजंट हेल्प एंड दैट विल जस्ट लीड टू फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन. फिर आप कुछ भी ले लोगे, फिर जिस व्हेन यू स्टार्ट अंडर वैल्यूइंग योर टैलेंट, विच इज व्हेन यू विल से कि अच्छा ये जॉब मिल रही है, ये कंपनी है, चलो कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ. क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो 500 लोगों को भेज भेज के. उसके बजाय इफ यू बी वेरी स्पेसिफिक, extremely specific, then magic can happen. So Fandot. I'll give a real life example. Sorry, Tavinder. Uh-huh. I'll give my own example for a second, right? So I've been working 15 years. Uh, I have changed jobs being in the startup world for relatively a little more than some people who've been with larger companies, right? Hmm. And ये हो जाता है startups में कभी कभी. Yeah. The biggest thing that I have learned is this one point कि spray and pray नहीं काम करते. Referral के through ही बात आगे बढ़ती है. Right. Referral meaning some connect. Doesn't mean necessarily referral system में through some friend तुमने डाल दिया वगैरह. Through a connect. Majority of my jobs, I have not had to apply to Correct. 500 places. Majority of them. I'll not say possible नहीं. To 500 places, I have had to apply to 5 places. And I get my option. Why? Because of these 3-4 things that we've spoken about so far in the last half. Right? I fully subscribe to that. I completely subscribe to that. Same experience with me. कि बट यहाँ पहुंचने में टाइम लगता है. Absolutely. राइट. थोड़ा टाइम लगता है. आपको कनेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, रिलेशन बनाने पड़ते हैं. आप खुद सोचो ना कि अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सोच लो, बॉलीवुड सोच लो, आपको क्या लगता है कि वो मूवीज इतनी सारी बनती हैं तो क्या सब लोग अपने पोर्टफोलियो भेजते रहते हैं? नहीं ना. वो सबके टैलेंट मैनेजर्स होते हैं, सबके रिक्रूटर्स होते हैं. आप वहाँ यू जस्ट, सो मेरा लॉजिक था, मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज हमारे टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस लॉन्ग 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 बैक, आई थिंक 8-9 साल पहले, जब आई एग्जिटेड माई प्रीवियस कंपनी एंड आई वाज फ्री. तो मैंने सोचा कि चलो, तब तक मैंने कभी इंटरव्यू वगैरह दिए नहीं थे, तब तक मैंने किसी ऐसा कुछ भी जॉब वगैरह हंट किया नहीं था. मैंने चलो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जॉब हंटिंग क्या होती है, एंड लर्न द अदर वे. मैंने सोचा कि मैं खुद तो इतने एफर्ट डाल नहीं पाऊंगा, राइट, कि जितना आलसी मैं हूँ. मतलब जो होता है ना, यू वांट टू These are your ऑप्टिमाइज. dancer days. दीज आर नहीं, पोस्ट डांसर These are डांसिंग post तो. dancer days. हाँ. अच्छा, by the way, Talvinder was very involved with Bollywood, which is why Bollywood का example आपको काफी सुनने मिलेगा in his initial after IIT, during IIT times. Yeah. सो मेरे को लगा कि यार अपने को अपना एफर्ट ऑप्टिमाइज करना जरूरी है. इतने कंपनीज को मैं कर नहीं सकता हूँ, राइट, रोज लगा रहूंगा, नहीं हो सकता. तो मैंने दिमाग लगाया कि हु इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम माई जॉब. इफ आई गेट अ जॉब, कौन बेनिफिट करेगा? एंड तब समझा कि टैलेंट कंपनीज जो हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होने वाला है. उनको डायरेक्टली पैसे मिलेंगे क्योंकि ठीक ठाक सैलरी मिलेगी, तो उनको पैसे मिलेंगे. अब उनको पता कैसे चलेगा मैं एग्जिस्ट करता हूँ? तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है. मैंने क्या किया, मैंने जाके, मैं उस टाइम पे आई एम जॉब्स पे गया, बिकॉज आई थिंक उस टाइम पे आई एम जॉब थोड़ी हट के साइड थी. अभी तो बहुत कॉमन हो गई, लेकिन उस समय हट के साइड, आई एम श्योर कि अभी भी कोई हट के साइड्स होंगी. तो आई एम जॉब्स पे गया एंड आई पिक्ड अप द लेटेस्ट 100 जॉब्स इन द स्पेस दैट आई वाज लुकिंग एट. उन लेटेस्ट जॉब्स में से वो सारे जॉब्स जिसमें कि टैलेंट एजेंसी ने डाला हुआ था, मैंने उनको अप्लाई किया. एंड
एग्जैक्टली उल्टा व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, बिकॉज उस टाइम पे ये वो टैक्टिक काम करके अभी शायद वो काम नहीं करेगी। एग्जैक्टली उल्टा वो टैक्टिक विच इज दो, मैंने सिर्फ लेटेस्ट 100 यूनिक टैलेंट एजेंसीज जिन्होंने वो जॉब पोस्ट की थी उनको अप्लाई किया, irrespective of whether the job had expired or not and whether the job is relevant to me or not. I'll explain the reason. मेरा गोल जॉब था ही नहीं। मेरा गोल था मुझे इन 100 टैलेंट एजेंसीज के डेटाबेस के अंदर घुसना है कि ये एक नया माल आया है मार्केट में। Yeah. ठीक है, एक नया माल आया मार्केट में एंड आई वाज होपिंग कि ये 100 एजेंसीज में किसी ना किसी को तो मैं चमक जाऊंगा एंड वो फिर आगे कर देगा। और वो ही एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने एक रात बैठा था, आई थिंक इट वाज लाइक फुल नाइट आउट मारी मैंने। 9 बजे बैठा, सवेरे 6 बजे तक आई अप्लाइड लेफ्ट राइट एंड सेंटर टू एवरीवन, मैं सो गया। एंड दिस एक्चुअली एंडेड अप वर्किंग, बिकॉज नेक्स्ट डे के बाद से मुझे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। रिक्रूटर्स के सामने से आ गए कि सर जो आपने जॉब अप्लाई की थी वो तो एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन मेरे पास 4 और ऑप्शन है। Hmm. या फिर ये फलानी जॉब है लेकिन मुझे लगता है ये दूसरी जॉब है जो मैंने अभी तक पब्लिश नहीं की है, उसमें आप शायद बेटर फिट हो रहे हो। Hmm. देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वेयर टू स्लॉट यू। Hmm. ठीक है, बट ये तभी हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब आप अपना रेज्यूमे के अलावा भी कुछ कहानी दिखाओ कि भाई मैं केपेबल हूँ। क्योंकि रेज्यूमे एक पेपर से नहीं समझ में आता है आपके। चाहे उस टाइम पे तो आर्टिकल्स ही कोई लिखता नहीं था, मैंने आर्टिकल्स लिख रखे थे, मैंने कुछ बैकग्राउंड था, बैक स्टोरी थी, वो सब मैंने एक्सपोज कर रखा था। दैट गिव द पर्सन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फिर बाकी सब कहानियां हो गई। Amar, I mean, this is a conversation that we can have for the next whole week, uh, right? But abhi, in this session, I think we have covered a lot of points, a lot of छोटे बड़े tips हमने दे दिए हैं. Um, let's pause here and let's regroup in the next class. Let's do that. Works. Thank you, everybody. Thank you again. Like Talvinder said, this is a few of the points. बहुत सारे हैं. Message डालिए, question पूछिए जरूर. We will प्लीज यस, कमेंट में respond. डालिए कि आपके सबसे मोस्ट एक्साइटिंग टिप्स या ट्रिक्स, अगर टिप्स नहीं बताने तो सबसे एक्साइटिंग या एडवेंचरस जॉब हायरिंग के क्या हुआ था कि अब लोगों ने ऐसा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने बोला "भक, नहीं चाहिए जॉब"। ऐसा हुआ था तो बताइए कि क्या कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स एंड क्या थिंग्स हैव वर्कड। द फनी थिंग अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स बाय द वे इज कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स की अपनी शेल्फ लाइफ होती है। मतलब शेल्फ लाइफ मतलब कि ये कुछ टाइम चलती है, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है, कुछ नया आ जाता है। ठीक है, तो बट इम्पोर्टेंट टिप नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि किस एंगल में सोचोगे तो टिप मिलेगा या ट्रिक मिलेगी, राइट? जैसे हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, अमर ने बोला कि 10 दरवाजे ठकठकाने पड़ेंगे। अब वो एंगल सोचना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि 10 ही चाहिए, 10 ही दरवाजे ठोकने, राइट? रिक्रूटर वाला एंगल, ये हर किसी को पता है कि रिक्रूटर्स होते हैं और हायरिंग कराते हैं। लेकिन ये सोचना कि मुझे रिक्रूटर को एक्सप्लिसिट जगह खोज के पटा के अपनी जॉब लगवानी है, ये हर कोई नहीं करता है, राइट? वगैरह वगैरह। सो सम ऑफ दिस टिप्स एंड ट्रिक्स विल वर्क डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह की जॉब अप्लाई कर रहे हो, है ना? क्योंकि रिक्रूटर्स विल गेट इवन मोर एक्साइटेड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ सीनियर लेवल जॉब, बिकॉज उनके ज्यादा पैसे मिलेंगे, राइट? जूनियर लेवल पे शायद शायद उतना सेम ना मिले, बट वो ज्यादा मैटर नहीं करता। माई पॉइंट हियर इज दैट टिप्स एंड ट्रिक्स आते जाते रहेंगे। थोड़ा सोचना, थोड़ा अलग तरीके से सोचना सीखोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। ऑन दैट नोट, टुडेस class is going to be about my best thing, which is grilling Amar. So, हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे। We will play the role of a recruiter, sorry, not recruiter, of an of an interviewer from a very technical company, जो कि एक्सप्लोर करिए कि अभी जनरेटिव एआई को हम लोग अपनी दुनिया में कैसे यूज करें। और उसी कॉन्टेक्स्ट में दे आर ट्राइंग टू हायर समबडी। ठीक है, अभी एआई तो बड़ा टेक्निकल चीज है, राइट? अमर का बैकग्राउंड जो है वो यूएक्स वगैरह से आता है, राइट? ही इज अ साइकोलॉजी मेजर एंड ही कम्स फ्रॉम दैट साइड, तो विच इज व्हाई ही हैज अ लॉट ऑफ एम्पैथी, यूजर अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, जो उसने बहुत जगह पे अप्लाई किया, चाहे गूगल है, चाहे एयरटेल है, चाहे ओयो है।
गूगल बाय द गूगल कंपनी, गूगल का प्रोजेक्ट था, करेक्ट अमर? जस्ट टू बी यस, गूगल एब्सोल्युटली का एक जॉइंट वेंचर था वहां राइट। हाँ, तो भाई बाद में गालियां मत देना कि झूठ बोल रहे हो, नहीं एक्चुअली था। सो अक्रॉस दी 3-4 प्रोजेक्ट्स अमर ने बहुत सारा यूआई यूएक्स, सही यूआई नहीं यूएक्स पे बहुत सारा काम किया, and which is why he has been shortlisted by my fictitious company. Let's call it fictitious.ai. So fictitious.ai wants to is looking for people जिनको empathy, because हमें लगता है कि AI वगैरह तो सीख लेंगे, इतना बड़ा इंजीनियर खोज लेंगे जो कि कोड कर देगा, लेकिन समझना कि यूजर को हर जगह एआई नहीं घुसा सकते। यूजर को कहाँ एआई चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, सेंसिटिविटी रखना और वो सब रखना वो ज्यादा जरूरी है। बट एट द सेम टाइम एज ए रिक्रूटर, एज एन इंटरव्यूअर, मुझे ये भी जानना जरूरी है कि क्या अमर को एआई एक्चुअली समझ में आता है कि नहीं आता है ना? नॉट सुपरफिशियल लेवल कि हाँ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर डीप लर्निंग होता है, उसके अंदर मशीन लर्निंग, नहीं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली टैक्टिकली क्या अमर को समझ में आता है। सो मेरा फोकस इस जगह पर रहेगा, ठीक है? वी हैव नॉट प्रैक्टिस दिस, वी हैव नॉट रिहर्स दिस, ठीक है? सो इस इसके इस पात्र, इस कहानी के, इसके आगे के जो सारे पात्र सब कुछ काल्पनिक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली हैपनिंग राइट नाउ। लेट्स सी हाउ इट गोस, ठीक है? सो अमर, आर यू रेडी? पे। ओके, ग्रेट। बिफोर हाय अमर। स्टार्टिंग एक चीज, सॉरी आई हाँ। एम सो सॉरी, जो मैं कहना चाहूंगा, दिस गिव्स यू एन एग्जांपल कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है। दिस इज लाइव। एक यहाँ पर आई वांट टू जस्ट गिव अ लिटिल क्लैरिफिकेशन। एक मिसकंसेप्शन है कि यू हैव टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश। हम्म। यस, रियलिटी है, मोस्ट कंपनीज स्पेशली हायरिंग मैनेजर्स, एचआर राउंड में इतना ये नहीं होता, मगर हायरिंग मैनेजर्स एज यू गो इनटू लार्जर कंपनीज ऑन द प्रोडक्ट साइड, स्पोकन इंग्लिश बिकम्स इम्पोर्टेंट। नॉट दैट कि आप एक इनट ब्लाइटन की किताब परफेक्टली जानते हो वगैरह वगैरह, बट आप कम्युनिकेट कर पाओ, करेक्ट। ऑलराइट? मगर जब आप when you're on ground and you're working with engineers, let's take India, right? I'm taking India as an example. Very often आप हिंदी में भी बात करते बिल्कुल। हो, राइट? हम ये इंटरव्यू ज्यादातर इंग्लिश में रखेंगे, हाँ। बट फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चंस एंड जनरली क्या प्रैक्टिस होता है, but there will be sections जब थोड़ा सा हम हिंदी में interact कर लेंगे, because that also, my experience, especially in the initial rounds before getting into the technical with hiring managers, जो 4-5 आपको बात करेंगे, you need to build a relationship, करेक्ट। right? So we'll start at that point, and sometimes relationship हिंदी में बात करके कि अच्छा आपके परिवार में ये हैं, अच्छा ये करते हो आप, हम्म। ये एक बिल्ड होता है। So let's, करेक्ट। sorry, I just wanted to add that, please. ग्रेट, आई थिंक ग्रेट टिप। एज लॉन्ग एज आई थिंक कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस शोज, एंड कॉन्फिडेंस आता है कंफर्ट से, ठीक है? तो आपको अगर हिंदी में बात करके कॉन्फिडेंस आ रहा है, कंफर्ट आ रहा है, प्लीज करो, ठीक है? कोई रोक टोक नहीं है, लोग करते हैं, जिनको जजमेंट करनी है वो जजमेंट करेंगे, जिनको नहीं करनी वो नहीं करेंगे, एंड बेटर टू गो इन दोस कंपनीज जहां इन सब ट्रिवियल बातों के लिए जज नहीं किया जाता है ना? यू डू नॉट वांट टू बी इन दैट एलिटिस्ट, ओके, राइट्स। एलिटिस्ट बहुत हैवी वर्ड है, बट यू डू नॉट वांट टू बी इन कंपनीज जहाँ पे इन सब बातों को जज किया जाता है इंस्टेड ऑफ योर कोर स्किल्स, है ना? सो एनीवे, लेट्स कम टू द इंटरव्यू। ओके। सो मेरा इंटरव्यूअर का अवतार। हाय अमर। Hi Talvinder, good afternoon. Good afternoon. I hope commute was easy for you and it was easy to find the office. Absolutely, absolutely. Great. Thank you, Amar. Thank you for showing up. I really like the work that you have done in the past, and I was very curious, how how your perspectives are about technology and the cross section of technology with humans and so on. So, Um, sorry, I'm so sorry. Please go ahead. yeah. So I'll just give you a quick brief about who we are. I'm Talvinder. I have about 15 years of experience working as an entrepreneur, as a product head.
product leader in a variety of companies. And right now, I'm very excited about fictitious.ai, which is where I'm the VP. Fictitious.ai is battling the potential challenge of fictitious videos, images, and text that can be generated using AI. So we believe that we are just at the cusp of immense changes where it will be very hard to differentiate what is real and what is virtual, what was generated and what was actually clicked. Uh, some of the use cases are not that dangerous, but some use cases are very, very dangerous to reputation, to image, to everything. So we're battling that. And I fundamentally believe in the vision of fictitious.ai, which is why I joined this company. Um, fictitious.ai has been backed by some of the best investors out there, which is why we can afford you, if at all we end up working with you. Um, but more importantly, I think we have a great set of customers, which includes some of the governments, because governments are very interested in this technology on one hand, and on the other hand, a lot of corporates are very interested in ensuring that their assets, especially corporates which deal with image conscious products, they're very interested in seeing that their products are not being used in wrong images or wrong videos or wrong generative items. Uh, so that's a quick brief about me and about the company. Uh, Amar, I would love to give I would love to hear from you your quick background and what got you interested in an AI company, given that you have not worked in an AI company. Sure. So a couple of things, Talvinder. So yes, I come from a bachelor's in psychology with a master's in marketing, consumer behavior, and you know, mostly across my 15 years of experience have been domain agnostic, not specialized in a particular industry. And my focus has always been the user first, right? So what are the pain points the user is going through, the problem statements, etc. And I want to just double click and say that for me, a user is not only an end consumer. User could be you within, say, the organization. Maybe you're building an internal tool, right? Okay. So user for me is anybody using a particular technology or product. Yes. So understanding them is where my focus has been. Okay. I've done both leading team roles, building teams as well as individual contributor roles. And I think partly my experience, first half of my career, has been around the marketing space. And that kind of gives me a bit of an edge, I feel, over other people who you may be interviewing, Mm-hmm. because of the points you raised about understanding the corporate side, right? And how important image is to them. Because I've actually helped companies build their images, right? So Right. everything from ATL, BTL, SEO, online relationship management, etc. All of that has been there in the first half of my career, right? Very interesting. So, And sorry, yes, Amar, I'm interjecting here. yes. Um, what was your motivation to apply to fictitious.ai? So for me, look, there are two factors, and I just want to correct one of the statements that you mentioned earlier. Is that I have had my experience with the AI field, Okay. okay, being a product manager. In fact, I was lucky enough to get exposure before the big boom of 2021-22 of AI happened. I Uh, see. and it started in 2018-19 with, getting exposure to the Google technologies because I was with an organization that is a Google Data Trust organization. And we actually dealt with a couple of problem statements exactly around what you mentioned, I see. right? So image recognition technology was still evolving, Okay. and we actually did a lot of work and building use cases for rural India, for governments as well as corporates to use Okay. using image recognition technology, right? Interesting. So that's So where this interest for me came about. now I am also very interested to understand your view on AI. What was the exact use case that Sure. you tackled there? Right. What do you see the difference between image recognition back then and image recognition now?
Number two. And number three, um, what are the potential issues that you anticipate in using AI with image recognition? Okay. So three parts to three questions that you raised, right? I'll respond to each one of them. The particular use case that we looked at was twofold. Mm-hmm. We used image recognition technology from a point of view of monitoring attendance. So Okay. we had on-ground workforces in rural India, both Mm-hmm. rural women who we had trained on technology. And the purpose of the organization was to increase digital learning across rural India, I right? see. So it's the world's largest global digital literacy program. So one was the rural women who we called internet sathis. Okay. And the second was the actual operations team of the NGO partners that we had tied up with, right? So the use case of monitoring comes about in terms of attendance of the lectures on ground, attendance that, okay, I have gone and now further taught ABC more women about, Mm-hmm. the internet, Yeah. and not just taking that information and just typing in anybody's information, but Okay. actually taking an image to be able to verify that it is a new individual, right? And the operations team from a perspective of whether they were there during the actual teaching of the class, etc. Understood. So this image recognition was, I'm assuming, was the face recognition. Facial recognition, Okay. right? Go on. And the second use case that we used was object identification recognition, right? Where we actually wanted to create like these maps of the villages where each thing was located. For example, a water pump, Okay. right? The hospital, the post office, the doctors, right? So we used a combination of there is a feature, a sub feature of Google Maps, which is not used by everybody, which is called Okay. plus codes. Okay. Plus codes is literally you can drop it down to a radius of 5 meters around yourself. So Interesting. it reduces the, instead of, you landing a 1 kilometer somewhere near the location, you Hmm. literally land up there. Along with taking an image of the actual object, say whether it's a water pump or whether it's a hospital or a post office, ABC, and combining the two to create these maps which anybody in the community can use. So these were the two use cases, right, Got that it. we essentially utilized. Do you have any more questions on this, or should I move to the next question You that can you please had? go ahead to the next. Yes. So one of the biggest differences that I see today, on the image recognition side is the ability for companies to truly understand the underlying biases that Okay. come. So, for example, you would have heard about a lot of cases of racial profiling basis facial technology, right? It's very, very popular in the US and Europe about the privacy laws coming into play of, creating racial biases when police uses facial recognition technology, correct? That I think has evolved a lot, Okay. whether it be Google, whether it be other organizations out there, as to how they go about handling those biases. Okay. The second piece that I think has changed is users themselves today, at least the digital first users, Yeah. are more educated about their privacy Okay. and what they give their permission for. So I'll take the example of what we did in India, right? At that time, like in the US, in Europe, you have the GDPR laws, which are the data privacy Yeah. laws. Okay? I'm sure you guys being in the space would be very familiar with all of this. Yes. Uh, in the US, there's not one singular law. There are multiple laws, basis, region, etc. Yeah. But all of them talk about how they protect their privacy. Uh, and in India, there wasn't any, at that point in time, any clear law per se. There was a bill in Parliament. Krishna Committee, etc., was talking about
how do we create our own laws. One of the recommendations that had happened at that time was all data needs to be stored within Indian servers for India data. I mean, anything that's relevant, right? Got Which it. was taken from the GDPR. So, sounds good. So, Amar, understood. I think I get your drift. Let's jump to a specific problem Yeah. to understand your take on building AI first products. Um, let's consider um, the advent of generative AI right now. Mm-hmm. There's just way too many use cases, way too many scenarios that are coming up. What is your take, briefly? What is your take on generative AI? Where do you think, what are the use cases that you think will be most relevant from, let's say, 6 months, 1 year down the line after all the current hype has died out? Okay. So quickly, my take on Gen AI is that it is the future, but and I kind of try to look at AI not as artificial intelligence only, but as artificial assistance. Now, what do I mean by that? It's very, very important to have a human layer in what you're building using AI, because while AI has been there for 70 odd years, Yeah, it's now that the back-end technologies and the support to be able to take AI to the next level has started to come about. sure. And that human intervention on privacy, ethics, etc., is very, very important. To if I take ChatGPT I as see very, that you have a lot of focus on ethics and AI ethics, etc. yes. I can see that. Uh, what are the use cases do you think are that will continue to be important? So definitely, I think the use of generative AI in terms of um, recommendation systems, in terms of creating login agnostic personalization Hmm. for various apps out there, to be able to do prediction models much more quickly, such as location prediction based on other parameters, even if I don't give permission, right? I think these are some of the use cases which are going to evolve, and in 6 months to a year from now are going to be pretty big pieces, right? Specific to fictitious AI, I think the big play that I think may be very important is how does moderation as a AI scope kind of evolve, right? Moderation, I think, will become a big play in terms of whether it's government or corporate for you. That might become one of the key centers, and I'd love to hear from you as this conversation progresses, how you all are thinking. Um, let's zoom into one specific use case that you just mentioned, which is the login piece. Yeah, Can you unpack that? Can you act as a product manager right now sure. and take me through how would you develop a product like that? What is that product and how would you develop that product? How would you use AI technologies to develop that? Sure. Can I take a couple of minutes to make some Sure. notes? Yes, please.
All right. So I'm going to just give the broad pieces, and as you would like me to, then I can, further double click on any one of these, right? So first of all, I think very important is to clearly define what the problem statement is, right? So the problem statement here that I am taking on is how do I personalize? Let me rephrase. My homepage is not able to personalize without the users logging in. And forcing users to log in is increasing my churn. I'm taking that as an assumption because we did an A/B test and saw that making it mandatory is causing them to drop off. Okay, so that's essentially the problem statement. How do I create a personalized homepage for each user without them needing to log in? Okay. Then what I would do is essentially do some competition analysis, do some market scoping from a technology perspective. What are the tools out there that are being used, etc. So, for example, AWS or Google might have already ready-made some technologies out there. What is their performance? Who's using them for what use cases, etc. Sure. Right. The third piece that I'd get into then is solutioning. Right. But before solutioning, it's very important to decide on a metric, right? And the metric that I would target over here is essentially and I'm going to split metrics up into two pieces. One is a business metric and one is a product metric. Okay. Business metric is users converting, meaning actually making a purchase on the app, right? And the product metric that I'm going to follow is the number of the amount of time a user is engaged on the homepage. Sure. And the model metric that I'm going to follow is accuracy instead of precision and recall. There are three metrics usually, and I'll follow accuracy, and while precision recalls will be secondary metrics for the model. Sure. In the solutioning piece, the way I would approach this problem statement, once I've done my scoping and etc., figured out my problem statements, to sit with the data science team, right? And work with them that these are all the models I have scoped out. Them being the experts in this field, what are the models that they say that they feel would work best? And what I would do, because let's assume another assumption that no such model already exists in the system. Okay. I would go with a rule-based to start with. Okay. Learn from that, then build a more of an ML-based, AI-based kind of solution, right? In the rule-based, what I would essentially look at is what are data points which are already available to me in the system, right? So, for example, I might have users' locations, right? Okay. And the locations could come through GPS being active, could come through device ID, could come through, essentially, their technology is called like Akamai, which essentially at the back end just send a little like clip to the app to see where they are location wise. Location becomes a big point in terms of personalization. What I would also do is split the users up into two broad segments or categories. And of course, it could be much, much more, but just for the sake of this conversation. One is users who have come to the app before and booked. So let's assume it is either a travel app, a hotel app, whatever. Please pick one. Yeah, let's just be very specific and let's pick one. And let's take it's a hotel booking app, right? Okay. So they have come and they have made a booking. All right. The second category that I would create is users who have come but not made a booking, plus users who have never come. Okay. Okay. So this for me is a repeat visitor, category A. Sure. Repeat visitor simply equal to having made a booking. Okay. New visitor equal to somebody who whether has come or not come,
but has never made a booking. Okay. Okay. And essentially what I would do is then look at what are all the data points which are available to me for Mm-hmm. me to then personalize the homepage Okay. basis these two segments or categories. Can you So, can you take decisive assumptions here and sure. proceed with giving a very specific approach to building this? And I also want to understand how we will make this login agnostic thing that you're talking about. Right. So from a rule-based perspective, the first piece that I would break down is where all would I get location information from? Okay. Let's assume that I'm getting it from the GPS, and let's assume I'm getting it from Akamai, which is what it's a backend piece which just sends information of location, right? Uh, the second piece of information as to what the user is actually engaging with, Mm-hmm. right? In terms of users who have made bookings, I have booking history. I will automatically also have their search history. Right. So these are my two primaries that I will use. Booking history having a P0 value, right? Because I have seen in my secondary data that people who book in a particular hotel slash city are 50% of them are likely to continue booking there. Okay. So in the initial model building, I will take that 50% as my baseline, Got it. right? And then see how we build on it. From the second category perspective, I mentioned two types in the second category. The first one, I may or may not have a search history because Okay. the user simply came on the app and dropped off, right? I definitely don't have a booking history, but I have location, right? Mm-hmm. What I will do is if I have search history, that becomes my P0 point of data. If I don't have, then location takes over. Mm-hmm. And from there, what I will essentially do is build a similar user category. Mm-hmm. Similar user being compared to the first group of users. Mm-hmm. If the location is from the similar location as those group of users, Okay. I will create their persona in the system to have similar recommendations pushed to them. Okay. And this is just in the first version. Once I've built out this rule-based system, right, I will launch it as an A/B, Okay. right, to see what is the accuracy rate that I'm getting, what Okay. is the conversions that I'm getting, and are people actually engaging with the homepage more, right? Understood. And this is the model. I'm not getting into the UI piece because that's not part of our discussion. Understood. Got it. And then after this, performance measurement, keep improving, take the learnings, and then move it into an AI model kind of system. Got it. So assuming that this has improved our conversion rates by X percentage, which means people are churning churning out, and we are able to give better personalization than what was possible earlier. What will be your next steps? And can you just take me through the step-by-step process of converting this entire thing into an AI model? What kind of data will you look for? How much data will you look for to making data pipelines to everything else? Okay, give me a couple of minutes. I'll just double click this out for you.
So the way I would go about this is once I have, say, the rule-based model in place, like you said, the success is showing, and we now decide to make it into more of an AI ML-based model, right? One of the conversations that I'll have with the data scientist is the ROI behind needing to build our own versus using something which already exists. And the decision we end up taking for the conversation is that we go with something which already exists on AWS, okay? And we simply will build on top of that, right? Let's not take that path. Let's take the different path where we decide to build our own AI because we are an AI company, right? All right. Okay. So if we decide to build our own AI, the way that we kind of will go about this is we'll understand, first of all, what all data points are available to us, right? Let's assume that in terms of number of observations, we have maybe 1 million observations already in place. In terms of features, let's say we have about 100 features that we can, so that's your rows and columns, right? And we have maybe about 100 features that we can play with. Yeah. Sure. That's the fundamental data that we kind of put together. We, Okay. of course, need our data pipelines, our ETLs, etc., all in place. Let's assume that because it's an AI company, we already have an ML ops platform where a lot of this testing and everything can happen. Sure. Because one of the things with 100 features is instead of creating a simple black box model, Yeah. we will experiment with which feature, if we increase weightages, gives us the highest rate of return, right? That will be an important piece. In terms of testing as well, we would split this 1 million observations up into, say, 200K, 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 and test with each, say, 1/5 of the 200K in an 80-10-10 kind of split, right? So 80 is your baseline, 10 is your experiment of a feature, 10 is, verification of the testing itself, right? Got it. That's the way we kind of do it. The MLOps platform I mentioned, why it becomes vital, is when we are deploying a model like this, simply using the engineering team to deploy it versus the MLOps, which is under the data science team, integrated with the engineering systems, allows us for better control, especially in an A/B construct, right? So if we see any kind of issue happening, we know where we can immediately tap in and do our RCAs as well. Because any such systems which are AI-based, that visibility is something which gets lost very, very easily if you don't have, control over. Right. Understood. Okay, so let's assume that we developed this AI model. Now, how would you know that this AI model is working? Apart from, of course, the churn and everything has improved, conversions are improving, etc. So there is a clear outcome that we are seeing. But then there are, of course, hallucinations, and there are other things that can potentially happen. Sorry, what word did you use? I apologize. Hallucinations. Right. So that can happen, as well as there could be biases, there could be other issues like you spoke about accuracy and recall, etc. How would you know that this entire model is a success? Apart from the business outcome, what are the other things you're going to look into? So, and this is my practice that I've essentially followed over the last few years, right? Which is where I also mentioned the need for human intervention at every stage. While you might have a system, or you can build a system or use a third-party tool to check things like accuracy. Okay. That itself might carry certain inherent biases in it, whether in the algorithm itself, or whether in the deployment bias. It could be multiple types of biases, right? I believe in doing manual checks. For example, let's assume that the personalization is working fine in terms of the end business outcome, like you said. As a product also, people are engaging more with the homepage, right? However, we can use tools like UXCam if we want to actually see what is the engagement happening on the
homepage? Okay. Are people actually clicking what we are making changes on, or they are clicking on other things because what we are recommending is not really working, right? That's one way to do it. The second check that can be more manual, right, is speaking to users, going on ground and actually doing user interviews, right? The third way to do it is essentially the way I kind of do it is take out very simply and something I don't need to depend on anybody, right? I can take out click rates myself on the homepage, right, and analyze that and Okay. check the journey basis click rate to final conversion. What is it that the user is actually converting from and not just clicking through and converting, right? Got it. So these journeys is what I would check manually. Understood. Sounds good. Amar, moving on from that question. Um, so what I've understood so far is that you do have a sense of AI, like how exactly it works and how it exactly operates. And you, of course, have a certain amount of inclination towards UX and towards empathy towards users in general, more than the technical side of things, which is great. Um, See, once you see in fictitious.ai, one of the key things that we're doing is figuring out deepfakes, figuring out um, uh, what image is original, what image is not original, and so on. And this overall is a very expansive idea because this will work from images to videos to audio. So all different modalities that can exist, it will work on all of those fronts. Um, as a PM, if you have to develop a product that will identify deepfakes in images, what is going to be your high level strategy? I just want to understand your direction, not the technical side. Okay. Uh, at a very high level, what I would essentially go about building is a moderation algorithm, Okay. right? And that moderation algorithm will essentially allow me to differentiate uh, at a precision and recall level, not just accuracy as a final output. And why precision and recall? Because false positive and false positives and true negatives both become a play for us to keep in mind, especially in the deepfake kind of mindset, right? Uh, so that would be essentially the strategy kind of perspective of what I would pick and why. Right. Very interesting. Okay. Um, Amar, if you have any questions from me, this is all from Yeah, my side. so I would love to understand a couple of things, and thank you, Talvinder, for the questions, and gave me some insight of what is it you guys are thinking about. But I'd love to hear what is while the JD exists, but what is it that you, as the hiring manager, are exactly looking for from this person, right? As in terms of the role, what's the day-to-day kind of a look like? And B, what is the organization's vision? Okay. Not just in terms of, yes, we are tackling this as a problem statement, but if you could break it down a little bit more and how my work fits into that vision. Great question. Great question. So what I am looking for is somebody who is very agile and very resourceful while being grounded on the first principles. I'll explain the reason for this. See, we are in the AI world where things are moving at a breakneck speed. Like it's so hard to keep up. It's actually double exponential the speed at which AI algos and models, etc., is growing. Which means Jeff Bezos has a very interesting saying. He says, "You cannot predict what is going to happen. The future is going to hold for you. So instead of focusing on things that are changing, focus on things that will never change." Which is why we took a slightly orthogonal stance that let's look at people who have a good grip of things that will not change. And we firmly believe that human psychology is not going to change. That is going to change in centuries. So at least in our Jindagi, that is not going to happen. Sure. Which is why we are having this conversation. Um, so that is exactly what we are looking for in a good candidate. Of course, knowledge of AI is important and understanding how things work is important. But
but that's in our model of the right candidate. That's not the easy. That's not the most important thing. Rather, we are looking for people who are resourceful, who are agile so that they can keep up. Resourceful because a lot of these models are not the state of the art models at the moment are not necessarily perfect. So a resourceful person will know that, oh, I can stack this model with this model with this model, and I can get a good result, right? And will not. That is how we can, build the next future. Um, and grounded in first principles because that person will be aware of um, things that will not change and will be able to take the right decisions. So these broadly is what we're looking for. I hope that answers your first Yes. question. Thank you. Uh, Yes. and secondly, as a company, what we're trying to our vision is our vision is not to remove all the or classify all the generated content as evil or as bad. We are not trying to do that. Rather, we believe there's going to be happy coexistence of um, generated content as well as actual content. Pretty much like how in the world of music, we saw analog and digital. So very few less content was digitally generated back in the 80s in India, for example. And most of the content was analog. That is, it was recorded live and then it was distributed. And at that time, there was a lot of furor over, oh, this is crap music or this music is not actual music. इसमें तो actual लोग ही नहीं है. So that was a huge, but now 99% of the content is digital. Music is digital, right? Live musicians are very expensive, very hard to do. I believe the same thing is going to happen. We believe the same thing is going to happen with the generated content and when it comes to images and videos, etc. The cost of producing content is going to go down, which is of that is a very first principle approach that if it's going to go down, the cost is going to go down. There's going to be a surge of content which is easy to produce, cheap to produce. Actually, not easy, but cheap to produce. And in that state, it is simply just important to one provide build and build a layer of, let's just say, validation slash verification that this content that you're watching is AI generated. Not that it makes it bad, but just knowing that this is AI generated for the next 5 to 10 years. After that, even that logo or that watermark will also be not be needed because nobody will care. Hmm. The next to next generation from us, they will not care because they would be born in a generation where all the content is AI generated and humans are simply uh, they're puppet masters. Right. That's our vision. थोड़ा लंबा vision है 20-30 साल का vision है. I hope that answers the second question. Yes, it does. Thank you. Thank you so much. That really helps. Yes. Okay. So, जनता, एक second. Let me go back. हाँ जी. Interview समाप्त. I hope मजा आया आप लोगों को ये सारी बातें सुन के. And I think थोड़ी घबराहट भी होगी because जाने अनजाने में हमने ढेर सारी AI की बातें कर ली. कि AI ये है, AI वो है, बहुत सारे terms की मैंने बातें कर ली. Right? Amar, what do you think? मैं इंटरव्यू के बारे में थोड़ी बातें करूंगा और लेकिन अमर at the moment, what do you think? How did the interview go? I know that as I was giving the interview, कोई चीजें मिस हो गई. वो जैसे मैं बता रहा था वो तो दिमाग में आ ही जाता है. एक इसमें मैं ये जरूर बोलूंगा कि जनता को कि जितने इंटरव्यू आप कर सको और जितने मॉक्स आप कर सको उतना ज्यादा अच्छा है. बिल्कुल. आप उतना सीखोगे कैसे फाइन ट्यून करोगे, कैसे एग्जैक्ट पॉइंट पर आंसर कैसे कर सकते हो, वगैरह वगैरह. राइट. करेक्ट. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स ये भी आपको समझ आ जाएगा कि कौन से पॉइंट पर मैं सवाल क्या पूछ सकता हूँ वगैरह, जो आज हमने ये वाले सेशन में इतना नहीं किया. क्लैरिफाइंग क्वेश्चन जो बोलते हैं. राइट. बट या आई थिंक my only intention and our intention is just to give you some visibility कि क्या जनरली पूछा जाता है, एक बेसिक ब्रेक डाउन करके कैसे आप जवाब दे सकते हो, एंड पॉइंट्स लाइक दैट. बट यस, आई मीन Talvinder being the interviewer, I'd love please hear out, and I'm happy to get the feedback because this is a live session that we're recording, right? So yeah, Talvinder, please go ahead. Okay, so I think there were a lot of these great moments and there were a few moments that I felt we could have improved. Great moments were
how Amar would take a step back and would come back with very precise, structured questions or assumptions or categorizations. Okay. Um, that's a very, very important, helpful tip because to understand that people, सबके brains ना भटकते रहते हैं, हम सबके brains भटकते रहते हैं. तो in the world of this entropy, heightened entropy, entropy मतलब randomness, हाँ, उसको ये thermodynamics का term है, entropy. अगर इंटरव्यूअर भी भटक रहा है, वो खोज रहा है कि ऐसा कुछ मुझे कैंडिडेट बोल दे कि मैं रुक जाऊं, कि मुझे मेरा इंटरेस्ट एंकर हो जाए कि अच्छा इस कैंडिडेट में कुछ दम है, तो मैं थोड़ा और इन्वेस्ट करूंगा अपने आप को अच्छे क्वेश्चन पूछने में. ठीक है. सो जब कैंडिडेट्स टिपिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं या स्ट्रक्चर्ड बातें करते हैं कि पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, या फिर आई कैन एक्सप्लेन दिस बट इन थ्री पॉइंट्स, this, right? This helps the interviewer to also um, anchor to those 3 points, which Amar did very well across. जहां भी बात करनी थी, कभी कैटेगरीज में, कभी किसी में, कभी किसी में, he always spoke in points, in bullet points. One thing which he could have improved when talking about that would have been, um, there's a psychological, I don't know exactly law क्या बुलाते हैं उसको, लेकिन there's a psychological benefit of calling out the number of points you're going to make. So saying something like, I have 3 reasons for this. Reason 1, reason 2, reason 3. So instead of saying, I have 3 reasons, A, B, C, for some reason, alphabets do not register that very well than numbers. मैं बोलूँ A this, B this, 3, C this, versus 1, 2, 3. So पता नहीं, maybe it's the maths, the numbers सुन के कोई तो हिस्सा होता होगा दिमाग का जो जग जाता है, but hopefully traumatic region नहीं होगा, लेकिन That's very interesting point. Yeah. बट टिपिकली अगर आप पॉइंट्स बताने वाले हो तो पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री बोल लो. ठीक है. ए बी सी वगैरह मत बोलो. ठीक है. एंड टिपिकली रिजर्व दिस ए बी सी पी क्यू आर वगैरह जो नोशन होता है फॉर वेरिएबल्स, कि मैथ्स ने एक ही चीज कही कि आपका एक्स कहाँ है, राइट? वही सेम कहानी यहाँ पे भी है कि कंपनी एक्स में ये हो रहा है, तो वेरिएबल्स को वहां रखो और पॉइंट्स को 1, 2, 3 नंबर्स में डालो. दैट इज वन इनपुट. नंबर टू, आई विल ऑल्सो रेकमेंड कि हाउस एवर कितना भी आपको अर्ज हो रहा हो ना, खुजली हो रही हो, आपको बहुत सारी बातें करने की, कर्टेल दैट एंड 1 मिनट, 1.5 मिनट के ऊपर आपको बोलना नहीं. एक बार 1, 1.5 महीने से मिनट से ऊपर सामने वाला बंदा रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा. आप बोलते रहो बिकॉज यू आर इन्वेस्टेड इन इट, लेकिन सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाएगा. टू हैंग ऑन टू दैट एवरी सिंगल वर्ड वो नहीं कर पाएगा. इट्स वेरी हार्ड. और जो अभी तो मैंने नोट्स नहीं लिए, नहीं तो टिपिकली क्या होता है कि रिक्रूटर्स जो हैं, जो इंटरव्यूअर हैं, वो नोट भी ले रहे होते हैं साथ में. ओके. तो नोट भी लेना है, आपकी बात भी सुनी है और उसको कॉम्प्रीहेंड करके मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है. तो इसी कारण ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि यू कैटेगराइज योर आंसर्स वेरी वेल एंड स्पीक बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन दैट द रिक्रूटर कैन और द इंटरव्यूअर कैन ग्रैब. यहाँ पे अमर डिड फैंटास्टिकली वेल फ्यू प्लेसेस एंड कहीं पे ही वेंट ओवरबोर्ड, वेरी स्पोक अ लॉट. ओके. We can, if the time permits, we can try once again to fix that. I mean, we can just try to repeat that same question and this make an attempt, other attempt. मैं कोशिश कर सकता हूँ कि अगर इसको छोटे में बताना तो क्या बोल सकते थे, right? There was another feedback. इसके अलावा I think the amount of technical depth that you went into, that was very good because that was impressive. That helped me as an interviewer of an AI company get the confidence कि बंदे को UI UX समझ में आता है, UX and human design समझ में आता है, लेकिन साथ में उसको टेक्निकल भी इतना पता है कि वो डेवलपर से बात कर सकेगा एंड डेवलपर्स उसको बेवकूफ नहीं समझेंगे. इसकी he will be influential in front of developers basically. So that was all good. Um, let's make an attempt. Amar, do you remember the questions that I asked?
So I think let's look at probably one of the larger questions and how, maybe I'll ask it and you can take a stab Sure. at. Sure. Huh. Right. So Talvinder, let's do this. One of the points you, as a use case of generative AI, you spoke about login agnostic personalization, right? Yeah. So could you outline for me how you would go about building this particular product, right? And it's up to you to take whatever industry, etc., and let me Sure. know what those assumptions are. Sure. So Amar, when you say login agnostic personalization, um, do you mean so there are two ways to look at this. One is, number one, the user is logging in, but irrespective of their personal details, we are still able to personalize their experience of the application. And number two is the user is not logging in, but we are still able to personalize. I'm Which referring of to these use cases? The second one. So without logging in, how do we personalize the experience? Okay, great. Um, so when it comes to personalization, it's a very broad term. It's an extremely broad term. Personalization could be as simple as "Hi Amar" when you log in or when you appear in an app. It could be just that, or it could be as detailed as "Amar likes this color and reacts the best to these kind of words, and which is why we should be using these kind of experience." Right? It could be that detailed as well. Do you have a specific preference between these two? So let's take a middle ground because Okay, the first one is the first example that you gave, Hi Amar, is very generic sure. versus the second one which you gave, which is literally down to the color. Yeah, We don't want to change the entire app's colors basis just a particular individual. makes sense. Let me add a layer to this. Let's say it is a hotel booking app and you are coming to the homepage and the cards, widgets that you see on the homepage and what those contain needs to be personalized to you and what you are looking for. Great. Okay, let's jump into this specific situation. To personalize without knowing the personal information of the user, there are few ways that we can do this. Or few data points that you can actually capture, let's just say ethically, without crossing boundaries. Um, in a website, it's a hotel booking site. In a website, I can capture one, the previous sessions that you have taken, and what kind of information have you accessed. Was it specific searches you made, or was it exploratory discoveries across the website that you did? Because that tells me your state of mind, whether you are exploring something or you have a very intent based exploration. Number one. Number two, did you click on specific locations on specific travel products? It's a hotel booking site. Hotel booking sites typically have hotels on one hand, which are either very transactional, like business hotels, where you just have to land up, sleep, and get to the office. Or this could be resorts, which are much more leisurely and recreational in nature, where you typically the decision making is not just for you, but rather there are other people also involved in the decision making. So I will basically look at your previous sessions and cookies for the same site, for the same device or similar devices. There are certain applications like CleverTap, which allows me to do cross-platform modeling of a single user without their login as well. So with all of this information, armed with all of this information, what I can do is I can start modeling what kind of state this user is right now. Hotel booking, the same person might also do business hotel booking. The same person can do recreational booking. The same person can go for very expensive hotels sometimes, and typically we look for mid-tier hotels. By looking at all of this information, I can build a simple model to find out that, or rather to predict what state of mind Amar is in
in this session, very likely. This can be further customized by looking at the timing. So typically in the daytime, if Amar has come in, he has always looked at business hotels, versus in the night time, if Amar has come in, this user X has come in, has always looked at leisure properties, which he aspires to go to, which we believe he aspires to go to. By using all of this information, on the homepage, we can customize the cards. We would not want to change, I would not want to change the entire layout of the web page, but rather I'll introduce a rail or a row which will have some cards which will resonate with the state of mind that we feel or we believe Amar is most likely in. That's probably the direction. I can go deeper into this if you would like me to. Sure. Thank you for breaking this down. What I would like to kind of just understand is, you spoke a lot about, so two questions. Question one, you spoke a lot about state of mind. Yeah. And the parameters you spoke about, say, for example, types of hotels, exploration versus intent, location, timing, etc. Yes. I'd like you to explain to me what are the states of mind per se that you believe that we should target. So this is question one. Question two, what examples you gave is not covering users who have never logged in before. So Sure. how would you logged in or have essentially you have data on before? So how would you deal with those users? So two questions. Great. Sorry. So the first question, state of mind, because we're talking about churn and we're talking about conversions, we're talking about transactions here. I think the state of mind that we all care about is the marketing 101 state of mind, which is the person at the exploratory stage, that is acquisition, interest, decision, action. Which stage is this person? Sorry, awareness, interest, decision, and acquisition. Is the person in the awareness where he's just simply exploring? He comes, explores, goes away, does nothing, which is decisive in nature. So he's still in the awareness and interest, which means we should give him more and more content, which is going to generate more interest, and hopefully, slowly, we are able to nudge that person into a decision bottom of the funnel. Okay. There are multiple such funnels exist. That AIDA is one of the most common ones. You can also look at pirate metrics, for example. That's another way to consider. So there are a bunch of different funnels that we can consider, and all we have to do is we have to bucket the user into which state of the funnel this person is. That is the state of mind that we care about, right? अब वो घर पे stressed है क्या है? We can't and we should not. As regard to the second question, you're absolutely right. I missed out on talking about them. See, for them, the only other way that you can figure out what to showcase to them is two things. One, what kind of content has worked out for us for all the first time users who have never been on our website? What kind of content? So we can have, you can imagine a laundry list of different types of cards, different types of content. It could be awareness content, it could be interest content, and so on. And which kind of content has worked out very well for us. And we can have a mix of, if there are 5 slots in that rail that I was talking about, 3 of them could be the ones which have worked for all the first time users, and 2 can be fresh content that we are testing out, that will it work for new time users. This is one of the ways that we can do. The second thing we can do here is we can personalize based on the location and the type of device. So we can capture the type of device. It's a Mac, it's a MacBook Pro, is it a Windows, it's a very old Windows, it's a very old Mac, etc. So you can make some amount of socio-economic status mapping, that this person with this device in living in this location seems to be of this strata, which again is marketing here. You're segmenting the user basis the parameters that you're able to observe. Using this, you can again go back using some apna AI model. You can look into the content that we have and what kind of content has worked very well for this strata or this
segment of users. These are the two ways that we can personalize for a user who has never shown up. Sure, that's great. Thank you. Okay, which also kind of completes our time. What do you think, Amar? What do you think of this I answers? think this is good. I think it was good learning, right? And जैसे आपने बोला कि हाँ थोड़े टेक्निकल टर्म्स हमने इस्तेमाल किए हैं, Yeah, बट आपको एक सेंस मिल गया होगा कि इंटरव्यूज में, स्पेशली पीएम इंटरव्यूज में, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और हर पॉइंट को थोड़ा ब्रेक डाउन करने में कितना इम्पोर्टेंस है. yeah. I think that is what Talvinder and me kind of really wanted to bring out in this particular session. प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, मगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी सब सब सेक्शंस होते हैं, which is all of this, right? So एक काम करते हैं, अमर. Let's take 2 more sessions. हाँ जी. One session, let's break down the AI terms जो लोगों को जानना जरूरी है. ठीक है, हम लोग फीचर्स की बात कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे. ऐसे एक वो करते हैं, और दूसरा एक रिलेटिवली इजियर, लाइक जो इतना टेक्निकल ना हो, थोड़ा सा इजियर मॉक करते हैं जिसमें पीपल कैन रिलेट विथ. ठीक है, किसी जोमेटो पेटीएम ऐसा कुछ यूज केस पे करते हैं. ऐसे कर So on that note, thank you so much. This was wonderful. बहुत मजा आया. हमें तो बहुत मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चंस करने में. होपफुली जनता को भी आया होगा. आप क्या सुनना चाहते हैं? आप किस चीजों के बारे में या आपने इंटरव्यूज दिए हैं और आपको बहुत परेशानी हुई उस क्वेश्चन को आंसर करने में, प्लीज कमेंट करके बताइए. काफी बातें कर ली हमने. एआई के बारे में बातें की हमने, इंटरव्यू भी कर लिया हमने, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में बातें कर ली. और हमें बताया गया कि भाई एआई के टर्म्स जो हैं वो थोड़ा, लोग थोड़े पैदल हैं उसमें, नहीं समझ में आते हैं एआई टर्म्स. सब कुछ बहुत ही घिचपिच घिचपिच लगता है कि ये क्या बातें कर रहे हो, एकदम अलग ही एलियन लैंग्वेज लगती है. सो वी थॉट व्हाई नॉट डू अ क्विक सेशन जिसमें वी कवर एआई टर्म्स. ठीक है, एआई एंड हम टर्म्स थोड़ा को. बेसिक रखेंगे तलविंदर. हाँ, भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बनेंगे. नहीं नहीं, जितना प्रोडक्ट मैनेजर को जानना जरूरी है उतना ही कि मोटा मोटी मेन टर्म्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, एंड उनको कहाँ यूज करना होता है, एंड उसको आप समझने की कोशिश करो. सिर्फ शो ऑफ करने के लिए टर्म्स नहीं पता चल रहे हैं आपको. ठीक है, बट आपको समझना है. तो अमर, व्हाई डोंट यू लीड दिस chat and I will act as a बच्चा स्टूडेंट who doesn't know कि अमर सर बताइए ना. जरूर जरूर. तो हम ये शुरू करते हैं थोड़ा, इसमें हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं 2 पीस में. हाँ. एक है जो एज अ पीएम यू शुड डेफिनेटली नो, हम्म. एंड हम यहाँ पर बेसिक लेवल पर टच करेंगे, मगर अगर आप ये इस्तेमाल करने वाले हो मे बी इंटरव्यूज में, हम्म. रेज्यूमे पर या कहीं पर भी, हम्म. डेफिनेटली डू योर ओन रिसर्च, अंडरस्टैंड इट मोर इन डिटेल. मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ. आई हैव बीन लकी सिंस 2018-19 to start getting exposed to ML and AI technologies, right? मगर आज भी मैं, इतना ये एडवांस हो रहा है और इतने फास्ट पेस पर हो रहा है, करेक्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टेंटली रिसर्च एंड लर्न, राइट? कोर्सेज अगर कर सकते हो कोर्सेज करो. यूट्यूब पर देर आर सम फैबुलस चैनल जो आप वहां जाके भी डिटेल में समझ सकते हो. करो, जितना रिसर्च करो उतना अच्छा, करेक्ट. राइट? So let's start with some things which are very basic, which is what are the kind of different models in a way, right? And मैं technical terms में नहीं घुसूंगा, मैं घुसूंगा as a PM what you may be asked. So, for example, let's say model examples करके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ये रेकमेंड. मॉडल क्या होता है? ओके, और भी बेसिक चल लेते हैं. हाँ, मॉडल क्या होता है? तो देखिए, एक मॉडल ऐसा होता है कि जो आपके डेटा साइंटिस्ट जिससे आप काम करेंगे, मगर हो सकता है आपके इंजीनियर्स भी, या फिर जो फ्री एआई टूल्स है उसके थ्रू भी आप बिल्ड कर सकते हैं. इट इज अ बेसिकली एन एल्गोरिदम. इट ओके. इज लाइक दिस
और भी बेसिक अगर मैं बोलूं लेमैन में, इट इज दिस वेरी वेरी, इट्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला विच हम्म। टेक्स मेनी डिफरेंट डेटा पॉइंट्स ओके। आपके, जो आपके पास है, कभी कभी आपके पास हो भी नहीं होगा, तो प्रिडिक्टिव टाइप एक हो जाता है जहां पर अमर, आप इस्तेमाल अमर, करके, या तो टेल मी इफ मेरी ये अंडरस्टैंडिंग सही है, तो एक मॉडल, एक, अगर आप राशन की दुकान पे जाते हो और आप राशन खरीदते हो, और उस राशन जब खरीदते हो तो उसमें 2 पैकेट बिस्किट के, 4 पैकेट सूजी के, एंड थोड़ा कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा 100 ग्राम आपने कुछ चॉकलेट ले ली, ये सब करके जो फाइनल नंबर आ रहा है, प्राइसिंग जो फाइनल आ रही है, क्या इसको आप मॉडल बुला सकते हो? मैं आपने जो स्टेटमेंट बोला ना तलविंदर, मैं इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करूँ, ठीक है? ठीक है। मैं ये बोलूंगा, देखो, एक एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं आपका जो प्राइसिंग वाला है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ, मैं जी। आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे, आपके जो कैप्स है, बिग बास्केट है, हाँ। समझो आपका ग्रोफर्स है वगैरह, एक टाइम होता था जहां पर हर आइटम इन एप्स के ऊपर एक प्राइस होती थी, वो प्राइस मैन्युअली एंटर होती थी। राइट। और क्या होता था, एक प्राइस लिखा जाता था, उसको कट करके डिस्काउंट 30%, 100 रुपया का करेक्ट, करेक्ट, 30% करेक्ट। करके 70 रुपया लिखा जाता था, और ये मैन्युअली मॉनिटर होता रहता। अब मॉडल क्या करता है? मॉडल आप जो बिल्ड करते हैं वो क्या करते हैं, वो इनपुट्स ले लेते हैं। समझो मार्केट्स में अभी एमआरपीस क्या चल रही हैं, ये 100 आइटम की। राइट। हमारा कॉस्ट क्या है? हमारा कॉस्ट है एक्स। मार्केट प्राइस बोल लेते हैं ए, कॉस्ट बोल लेते हैं एक्स, जो राइट। कॉस्ट ऑफ हमारा जो ऑपेक्स पकड़ो या जो भी ऑपरेशनल जी। कॉस्ट, जी। हमको प्रॉफिट बनाना है। तो ए माइनस एक्स एक बहुत सिंपल प्रॉफिट हो गया। मगर अगर हमको डिस्काउंट देना है हम्म। और फिर भी प्रॉफिट में रहना है, तो वो आपका जेड हो गया। तो आप ए में से एक्स तो निकालोगे, मगर आप जेड भी निकालोगे, और फिर भी प्रॉफिट आपको, होना प्रॉफिट चाहिए। वैल्यू एक सेट कर लोगे आप ये फॉर्मूला में, कि यार हर आइटम पर मेरे को कम से 10% प्रॉफिट चाहिए। ये एक बहुत सिंपल रूल बेस्ड फॉर्मूला की तरह हो गया। समझ गया। तो जो राशन की दुकान थी उसमें दो, सो एक तो हो गया कि जो जो एमआरपी है, एक तो वो ऐड हो गया, है ना, हाँ, 3 इंटू एक्स, है ना, 4 इंटू वाई, ये सब। और उसके साथ में जो नीचे डिस्काउंट देना है, अब वो जो अच्छा, वहां पे HI लगता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस लगता है, कि जो राशन की दुकान वाला है वो मेरी शक्ल देखकर, मैं कितनी बार आता हूँ, उसके हिसाब से बोलता है कि सर आपके लिए 50 रुपए, सर आपके लिए 60 रुपए, आपके लिए 30 रुपए। राइट। तो ठीक वही चीज, ये जो चीज है, ये एक तरह से मॉडलिंग हो गया है, कि जहाँ पे उसने अपने कस्टमर्स के लिए अलग अलग तरह की मॉडलिंग कर रखी है, कि कस्टमर बहुत बार आता है तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, ये कम आता है तो इसको मैं कम दूंगा, एंड सो ऑन, जिससे कि दोबारा ये इंसान वापस वॉक इन है। करे। तो ये एक एडिशनल मॉडल हो गया ऑन टॉप ऑफ द बेसिक हाँ। प्राइसिंग मॉडल। करेक्ट। आपने एक बेसिक प्राइसिंग मॉडल एमआरपी माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट कर लिया। करेक्ट। आपने डिस्काउंट कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से करेक्ट। यूजर के ऊपर, वो एक करेक्ट। अलग मॉडल है, वो भी करेक्ट। कर सकते हो, है और ना? जिसके, करेक्ट, जिसमें अभी और भी चीजें आती हैं, जो कि एक्चुअली स्विगी जोमेटो सब करते हैं, राइट, कि हाँ अभी जी, ये भी करते हैं कि आपके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप कार्ड से पे कर रहे हो, यूपीआई से पे कर रहे हो, किससे पे कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकता हूँ, या ये आपने दूंगा या नहीं बहुत दूंगा। अच्छा पॉइंट बोला। मैं इस पर थोड़ा सा दो अलग व्यू पॉइंट एक बार ऐड करूंगा, सॉरी, जो बिफोर वी कंटिन्यू, राइट। एक है सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, राइट। एक है पेमेंट मोड इंफॉर्मेशन, राइट। एक है जो आपने भी खुद बोला शुरुआत में, जो समझो आपका राशन वाला करता है, स्टोर वाला करता है, कि भाई ये मेरे यहाँ रोज आते हैं तो मैं इतना दे दूं।
अच्छा ये करेक्ट। नहीं कभी कभी आता है तो मैं इतना देता हूँ, करेक्ट। नहीं ये आता है हर रोज आता है, मगर हर रोज लड़ाई करता है कि मेरे को और डिस्काउंट चाहिए, राइट, हाँ। और बार बार प्रोडक्ट भी रिटर्न करता है। ये एक यूजर लेवल टाइप इंफॉर्मेशन हो गया। करेक्ट। तो ये तीन अलग इंफॉर्मेशन और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो दीज आर हम्म। ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स विच आई कैन यूज, और हम्म। फीचर्स जो मॉडल में बोलते हैं, उस पर हम आते हैं, मगर बहुत सिंपल रखते हैं डेटा पॉइंट, कि हम इस्तेमाल करके ये मॉडल को और इंटरेस्टिंग और स्मार्टर हम बना सकते हैं। मतलब मोर प्रिडिक्टेबल, मोर एक्यूरेट, मोर यस, लाइकली टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स दैट वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट, कर सकते हैं। सो करेक्ट, मोटा मोटी मॉडल की डेफिनेशन है कि वो एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है जिससे आप रिजल्ट्स निकलवाते हो कि भाई मैं अपने इसका जो बिल है वो कैसे प्रोड्यूस करूं, या मुझे नेक्स्ट मूवी कौन सी दिखाऊं इस बंदे को ताकि वो ताकि वो उस मूवी को खत्म को देखना चाहे। क्योंकि अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाओ और आपको आपके मन मुताबिक की मूवीज ना दिखाएं और आपको बहुत टाइम लग रहा है कुछ मूवी खोजने में, तो आप क्या करोगे, आप नेटफ्लिक्स बंद करके कहीं और चले जाओगे। सो जो आप सो ये सब के सब जो है ये फॉर्मूला ड्रिवन चीजें हैं जिसके बेसिस पे एक प्रिडिक्शन किया जाता है, प्रिडिक्शन या किस तरीके का एस्टिमेट किया जाता है। अच्छा, यू वर टॉकिंग अबाउट फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशंस। अब ये फीचर क्या है? ठीक है। तो इस पर मैं ये मगर उस पर आने के पहले, आई थिंक फीचर और ऑब्जर्वेशन क्या है उस पर आने के पहले थोड़ा सा, जैसे आपने प्राइसिंग वाला हमारा एग्जांपल था, मैं दो तीन और एग्जांपल वेरी बेसिक एक बता दूंगा क्योंकि ये पॉपुलर है। हम्म। देखिए आप, हम सब ये ओटीटी इस्तेमाल करते हैं, हॉटस्टार हो, amazon प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, करेक्ट। जो रिकमेंडेशन इंजन्स इस्तेमाल करते जी। हैं, राइट। एंड दीज रिकमेंडेशन इंजन्स कैन बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। आप या तो वीडियो कौन सा दिखाना है, यूजर को अच्छा लग रहा है उसके, वो दिखा सकते हो। करेक्ट। इस पर आप क्या कलेक्ट लाइक्स करेक्ट करोगे, नहीं डाउन, अच्छा नहीं अच्छा लग रहा तो मैं और कस्टमाइज कर दूंगा, नहीं कोई कैटेगरीज है, मेरे को एक्शन ज्यादा अच्छा लगता है तो एक्शन ज्यादा दिखाओ, मेरे को स्पोर्ट ज्यादा, वगैरह वगैरह। करेक्ट। बिल्कुल। This is at a very basic level all about recommendation engines and there are राइट। many different types। ठीक है। एक और है जो इंश्योरेंस कंपनीज आजकल बहुत इस्तेमाल करती हैं, एआई, अपने एआई टूल्स में, जैसे आईसीआईसीआई वाज वन ऑफ द फर्स्ट, ओके। राइट, फॉर कार इंश्योरेंस एंड कार डैमेज, इमेज रिकग्निशन। हम्म। आप इंश्योरेंस, आपका कार गाड़ी लग गई कहीं पर, आपने फोटो लिया, आपने इंफॉर्मेशन के साथ उनके ऐप पर जो भी चाहिए उनको वो डाल के फोटो अपलोड कर दिया, दी एआई बाय इट सेल्फ डिसाइड्स कि ये डैमेज आपका जो है इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है या या नहीं है? नहीं, इंटरेस्टिंग। सो राइट। इसमें आई थिंक इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो व्हेन यू से रिकमेंडेशन इंजन, बेसिकली घूम फिर के बात इसी पे आ गया ना कि सर, अच्छा आप दुकान में वापस राशन की दुकान की बात करते हैं। मुझे राशन की दुकान का एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है जनरली टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं अपने किराना अगर शॉप पे गया, वो जानता है कि अच्छा सर आप वापस आ गए, वो आपका जो सामान था ना वापस आए, वो वापस स्टॉक में है, आपको जो फेवरेट बिस्किट है ना वो वापस आ गए, ठीक। एग्जैक्टली। राइट। तो और अगर अब आप डिजिटल वर्ल्ड में इसमें लेते हो तो बेसिकली आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये आप देख रहे थे, उस ये टाइम स्टॉक आउट में ऑफ आ गया। स्टॉक था, अब आप ये खरीद लो। करेक्ट। तो ये रिकमेंडेशन इंजन जो है मोटा मोटी देखा जाए तो ये नोटिस कर रहे हैं कि मेरे तलविंदर एज अ पर्सन, अमर एज अ पर्सन, वो क्या चीजों को क्लिक कर रहा है, किस चीज को चेकआउट कार्ट में डाला था, खरीदा नहीं था, एनी काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स दैट ही हैज बॉट इन द पास्ट। यस, इफ तलविंदर जैसे और कौन कौन लोग हैं और वो क्या क्या खरीद रहे हैं तो उससे भी सिमिलरिटी। तो ये बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे पैरामीटर सोच लीजिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारे फैक्टर्स को मैं यूज कैसे करूंगा, इतने इतने सारे फैक्टर्स इनको यूज कैसे करूँ, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर ये एआई या स्पेसिफिकली एमएल की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप इन सब का आपस में क्या इंपॉर्टेंस है, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मैटर करता है। राशन की दुकान की कहानी अलग होगी, मिंत्रा में अलग कहानी होगी, ई कॉमर्स किसी और स्टोर में अलग कहानी होगी। क्योंकि यूजर्स अलग तरीके के हैं, प्रोडक्ट्स अलग तरीके हैं, कि ट्रेनिंग अलग तरीके की होती है कि इनके बीच में। तो इनको बेसिकली ना पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर आपको याद होगा बचपन का,
तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बनते हैं। अगर मैं एक शीट खोल देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, सो अगर मुझे रिकमेंडेशन इंजन बनाना है फॉर एग्जांपल, एंड अमर फील फ्री टू इंटरजेक्ट व्हेरेवर। सो मुझे अगर कपड़ों का या चल राशन दुकान का एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। एक फैक्टर आ गया फॉर एग्जांपल आइटम्स यू बाय फ्रीक्वेंटली, ओके, देन आइटम्स यू बाय रेयरली, आइटम्स यू एक्सप्लोर योर प्राइस रेंज टिपिकली। अगर आप कॉफी नहीं 100 रुपए के ऊपर खरीदते, 200 रुपए की कॉफी नहीं खरीदते, तो आपको मैं 500 रुपए कॉफी नहीं दिखाऊंगा, right? क्योंकि प्राइस रेंज क्या होती है, टिपिकल बजट और टिपिकल कार्ट वैल्यू, यानी कि आप जब भी खरीदते हो कुछ, तो आप कितने रेंज में खरीदते हो, राइट? आपके ब्रांड इंक्लिनेशंस क्या हैं, राइट? ब्रांड्स, सॉरी, ब्रांड्स यू लाइक, ब्रांड्स यू लाइक, देन पीपल लाइक यू, व्हाट दे परचेज। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करना चाहोगे, राइट? अब इनकी आपस में क्या कोरिलेशन है, कौन कितना ज्यादा मैटर करता है, वो वेरी करता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम यूजर टू यूजर, और यूजर कैटेगरी टू कैटेगरी। तो इसका अब अगर मैं बहुत ही क्रूडली बोलूं, तो अगर हर किसी को मैं एक वेट दे दूं, तो इट बिकम्स अ सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन, जहां आप बोल रहे हो कि क्योंकि ये ना, वो है ना, ये रो नंबर 1 है और B1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ B1, सॉरी, ये मेरा कीबोर्ड क्यों अटक गया, give me a second. A, let's say A is the weight. So A into B1 plus B into C1 plus dot 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 plus N into I into I1. And this becomes your simple equation to figure out कि इस यूजर को क्या दिखाना चाहिए, कौन से आइटम्स दिखाने चाहिए। बहुत ही सिंपलिस्टिक, ओवरली सिंपलिस्टिक चीज है, बट अल्टीमेटली पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। और सारा का सारा गेम ही ये है कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज बाकी B1 C1 वगैरह तो पता ही है, लेकिन ए की वैल्यू बी की वैल्यू तो पता नहीं है। और यहीं पे आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ जाती है, यहीं पे वक्त, अब ट्रेनिंग भी एक नया वर्ड आ गया है, उस पे आते हैं। सो ये जो टर्म्स है ना, ए बी से लेकर आई तक, दीज आर द टर्म्स जिनको वो फीचर बुलाते हैं, करेक्ट? हाँ जी, करेक्ट। सो दीज आर योर फीचर्स, एंड फीचर्स आपके, जब आप अपने सिस्टम में देखेंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, जैसे हमने मॉक इंटरव्यू में बताया, आपके फीचर्स समझो अगर 1000 हैं, ये हाँ। मतलब नहीं है कि आप 1000 फीचर्स इस्तेमाल करेंगे, राइट? आपको इनको समझ के ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फीचर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रेलेवेंट है, एप्लीकेबल है। हम्म ये हम्म। इंपॉर्टेंट बहुत है, यहीं पर वो ह्यूमन फैक्टर एक आ जाता है, राइट? और आपके समझो, अगर आपने 100 फीचर अपने डिसाइड कर लिया, फीचर माने कॉलम्स, कॉलम्स माने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स, हर फीचर का आपके फाइनल रिजल्ट में उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, आपको एक यूनिकनेस समझना पड़ेगा। ये जरा करेक्ट। माइंड में रखिए, हम ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे, बट माइंड में रखिए। और अब जो तलविंदर जैसे जो डाल रहे हैं, दीज आर योर ऑब्जर्वेशंस, दीज आर योर रोज। ऑब्जर्वेशंस मीनिंग द नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस, राइट? एंड आप अमर लिख सकते हो एज एन ऑब्जर्वेशन, आप अमर 2 लिख सकते हो, मे बी अमर हैज विजिटेड ट्वाइस, दैट बिकम्स अ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज वो बिहेवियर अमर का अमर 2 में ये फीचर्स के लिए अलग हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात भी समझ। सो आपका जो डेटा बनता है, डेटा इस फॉर्मेट में बनता है कि आपके पास रोज होंगी ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कॉलम्स होंगे ऑफ फीचर्स। फीचर्स, ठीक है?
जिसको आप फैक्टर से बुला सकते हो, जो बुलाना बुला लो, लेकिन मोटा मोटी द एंटायर आइडिया इज, ये सारी ट्रेनिंग एमएल वगैरह, रिकमेंडेशन इंजन, ईमेल इमेज वगैरह, उसमें हो यही रहा है कि बैकग्राउंड में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, खड़ी की जाती है कि कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं टू गेट दिस प्रिडिक्शन आउट, एंड देन उस फैक्टर्स के बगल में जो वेट है उसकी कैलकुलेशन की जाए कि वो वेट कौन से मैटर करेंगे। अगर ये हो जाएगा, कहानी सही है, सॉर्टेड है। अगर ये नहीं हो पाएगा, कहानी सॉर्टेड नहीं होगी। सारी मेहनत इसी के ऊपर है। जितना डेटा आपके पास होगा उतना अच्छा है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू ट्रेनिंग पे हम लोग आते हैं, टू डिटरमाइन बिकम्स मोर एक्यूरेट। जो वेट्स है ना उतने एक्यूरेट होते जाते हैं। तो ओके, हम कमिंग ट्रेनिंग बैक टू, करते हैं. आई मे बी जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड ऑन द ट्रेनिंग थिंग. हाँ There are a few more terms that maybe we should just understand a little bit about. ठीक है. तो हमने देखो, मॉडल फॉर्मूला है, बेसिक लेवल पर हमने बात करी. हम्म मॉडल टाइप्स कुछ बता दिए. मैंने यहाँ पर सिमिलर सेगमेंट जो है वो सिमिलर करके, दैट इज बाय इटसेल्फ इज a massive problem statement that people in करेक्ट data science field try to solve. Uh, करेक्ट आप अगर पीएम बनोगे या ये वर्ल्ड में घुसोगे, इवन एज एन इंजीनियर फॉर एग्जांपल, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, major problem around cold start which even today is difficult to solve is similar. ठीक कोल्ड है. स्टार्ट प्रॉब्लम होती है कि अगर आप अपनी आप एक अपना नया ऐप खोल रहे हो, लेट्स से, जो कि आपको बेस्ट डॉग फोटोज दिखाता है इंटरनेट से खोज खोज के। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा क्यूट सा ऐप बनाया आपने फॉर व्हाटएवर रीजन। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग में आपको कौन सी डॉग फोटोज दिखाऊं जिससे कि आपको पसंद आएगा। तो मुझे, मेरे पास आपके कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। I know nothing about you. So what dog photos should I show? Of course, सारी dog photos cute होती हैं, but not necessarily, right? You may not like the छोटू dogs, you might like the बड़ा dogs, or you might you or उल्टा, you might like छोटू dogs, you don't like बड़ा dogs. So if I start showing you छोटू dogs and try to push you कि भाई यही cute होते हैं, you may not like it because you're not aligned with it. So that is cold start problem. Thanks, Talvinder, for breaking that down. So yeah, so we touched upon that. We touched upon features, observations, which I mean, very nicely, Talvinder, kind of broke it down on an Excel sheet what the whole structure looks like, right? हम अब आते हैं कि बहुत लोग बहुत जल्दी, प्रोसेस क्या होता है जब हम मॉडल बिल्ड करते हैं, हम्म स्ट्रेट अवे कि एआई हमको बिल्ड करना है, राइट, इस पर पहुंच हम्म जाते हम्म हैं. मगर एक थोड़ा एक आइडियल प्रोसेस एक चीज होती है विच ऑल्सो माई एक्सपीरियंस, जो मेरा जो एआई के अंदर रहा है, आई ट्राई एंड फॉलो दिस मॉडल, राइट, विच इज, आप पहले जो आप फॉर्मूलाज बिल्ड कर रहे हैं, जो भी आप मॉडल बिल्ड करना चाह रहे हैं, एक रूल बेस्ड एल्गोरिदम बनाइए. रूल बेस्ड माने बहुत सिंपल, कोई भी बना सकता है. आ, ये आपके 10 पॉइंट हैं. अगर आपको प्रायोरिटी देना है, समझो आपको किसी का लोकेशन ढूंढना है और वो आपको दे नहीं रहा है मगर आपको निकालना है, तो आप कितने अच्छी तरह वो निकाल पाओगे? अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ जीपीएस से होगा, जीपीएस वो आपका एक्टिव नहीं है, तो कैसे करोगे? आपके ऐप के अंदर शायद कोई टेक्नोलॉजी होगी जो पिंग करती है जब ऐप खुलता है, कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाता है, मगर वो बिकॉज लोकेशन नहीं दिया है यूजर ने, वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहता है, वो बहुत करेक्ट. ब्रॉड रेंज पर रहता है, राइट. सो ऐसे जैसे एज यू गेट इन टू फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशंस एंड यू स्टार्ट रीडिंग द डेटा, प्लीज हम्म अंडरस्टैंड, डेटा को रीड करिए. डेटा है, हमको बिल्ड करना है, ऐसे नहीं होगा. डेटा को पहले रीड करके फिर एक सिंपल रूल बेस्ड बनाइए. मैं आपको एक हम्म एग्जांपल देता हूं. अगर आपको एक मॉडरेशन एल्गोरिदम बिल्ड करना है, मॉडरेशन क्या होता है? रिव्यूज आ रहे हैं आपके वेबसाइट पर, आपके ऐप के ऊपर, लोग, people are writing abusive language, people are putting photos which are not got anything to do with the product that they bought, right? रूल बेस में बहुत सिंपल हो जाता है कि abusive language equals to ABC, and if anything from ABC is in the review, remove it. करेक्ट.
वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर मैंने कुछ इनोवेटिव डी टाइप गाली दे दी हाँ, तो वो रूल बेस्ड इंजन नहीं पकड़ेगा? नहीं पकड़ पाए, क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया कि एबीसी ही आपके अब्यूसिव गाली है। लैंग्वेज में पड़ता है। करेक्ट। Right? ये सेम चीज आप इमेज में भी अप्लाई कर सकते हो कि इमेज में ये ऑब्जेक्ट अगर है तो ये होगा। अब करेक्ट। ये एक और रीजन है मैं क्यों बोल रहा हूं, एंड आई ब्रीफली वांट टू टच अपॉन दैट। फॉर एग्जांपल, आपका AWS Amazon वेब सर्वर के रेडीमेड मॉडल्स मिलते हैं, हम्म। उसमें ब्यूटिफुल वेरी लार्ज डेटा सेट्स ऑन इमेज रिकग्निशन रहता है, मगर जो ग्लोबल हर कंट्री का एक अलग इंस्टेंस होता है वो मॉडल नहीं समझ सकता, क्योंकि हम्म। डेटा पॉइंट्स इतना सारा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई वर्कड इन द होटल बुकिंग ऐप इंडस्ट्री, ओयो, राइट? सो the model, which is the Amazon model, recognizes pan stains, and in India eating pan is normal, it's a cultural thing. It takes pan stains as blood. The model is not wrong, because the model has learned from other countries in the world that it is red in color, it is fallen on the ground, it is a flat structure, etc., etc., whatever जो definitions दिए हुए हैं. But in India, that is not the case. तो आपके रूल बेस्ड मॉडल्स और कभी कभी एडवांस्ड बेस्ड मॉडल्स जैसे ये वाला भी ये नहीं समझ पाते, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये सेम चीज कहीं पे ओके है और कम्प्लीटली अलग चीज हो करेक्ट, सकती है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसलिए इवन इफ द आइडियल प्रोसेस इज आपने रूल बेस बनाया, फिर आपने मॉडल बनाया, मे बी यू यूज्ड एक्सटर्नल मॉडल जो अवेलेबल है, मेटा के मॉडल्स हैं, गूगल के मॉडल्स हैं, अमेजोन के मॉडल्स हैं, सबने बनाए हुए हैं जो ओपन सोर्स है, आप उसके राइट। ऊपर बिल्ड कर सकते हो। ओपन सोर्स बेसिकली, वेरी सिंपली, सॉरी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट एनीबडी कैन यूज इट, एंड यू कैन यूज दैट फाउंडेशन, एंड उसके ऊपर आप जो बिल्ड करना चाहते हैं आप बिल्ड करो। मगर जनरली एक प्रोसेस जो फॉलो होता है रूल बेस्ड, फॉलोड बाय अ बेसिक मॉडल, एंड यू हैव वर्जन्स ऑफ द मॉडल एज यू कीप इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। फिर आप एक पॉइंट रीच करते हैं जब आप बोल सकते हैं कि यार मॉडल में एक बेसिक फॉर्मूला चल रहा है, हम्म। अब मेरे को ये फॉर्मूला प्लस ये फॉर्मूला प्लस ये फॉर्मूला, मतलब डिफरेंट मॉडल्स कंबाइन करके एक एक एडवांस चीज मॉडल करनी है, बन, फाइन ट्यून करनी है। करेक्ट, एक क्लस्टर मॉडल बन जाता है, राइट? So this is the ideal process, but any good data scientist, and therefore as a product manager you need to know this, you need to take it a step at a time. नेटफ्लिक्स आज इतना एडवांस्ड हो गया है, और मैं उसका एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, जब उन्होंने एक बेसिक लेवल पर शुरू किया था, उन्होंने सोचा यार पहले हम एक फाउंडेशन मॉडल तो बना लें, हम्म। और वो फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए उनको पहले एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा, विच दे कॉल नेटफ्लिक्स रनवे। यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, रिसर्च, इट इज ब्यूटिफुल, राइट? बट शुरू करिए बेसिक लेवल, इज माई सजेशन। गॉट इट। सो रूल बेस्ड इंजन हो गए जिसमें रूल्स होते हैं सिंपल 1 2 3, एंड वो रूल एकदम बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, और वहां से आप शुरू कर सकते हो। यू कैन गैदर सम इनिशियल डेटा एंड देन यू कैन फिगर आउट कि अब ये डेटा इसको यूज करके इनफ आ चुका है कि मैं थोड़ा सा एडवांस मॉडल बना सकूं, थोड़ा प्रिडिक्शन बेटर कर सकूं। तो अल्टीमेटली एमएल इज ऑल अबाउट, मशीन लर्निंग इज वन टाइप ऑफ एआई। सो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। वो बस प्रिडिक्शन करता है कि भैया ये दिख रहा है, ये हो सकता है। और जितने फैक्टर्स आप ऐड करते जाओगे उतना बढ़ते जाएगा। जैसे जनरेटिव एआई जो हम लोग बात कर रहे हैं, एलएलएम्स की बात कर रहे हैं, वो प्रिडिक्शन ही है। प्रिडिक्शन किस बात का? ये प्रिडिक्ट करता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड दैट शुड अपीयर इन द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू आर आस्किंग। अब वो इतना ज्यादा फाइन ट्यून कर दिया गया है इतने सारे पैरामीटर्स, इतने सारे फीचर्स पे कि वो प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट हो रहा है। और उसमें कुछ और भी टेक्निकलिटीज हैं, उसमें घुसेंगे नहीं। बट मेन तो यही है कि आप, हमें लगता है कि ये ह्यूमन की तरह बात कर रहा है, बट वो एक्चुअली बहुत ही मैथमेटिकल है। ये वर्ड है, इसके बाद ये वर्ड आना चाहिए, दिस इज द मोस्ट लाइकली वर्ड टू अपीयर विच विल साउंड रीजनेबल। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, दैट इज व्हाट दे हैव डन ब्यूटीफुली। And the best example is if you open Zomato or you open all of these apps, जब आप रिव्यू भरते हैं जी। तो
आपको सजेशंस देता है. हाँ, दिस इज टेकिंग सारे रिव्यूज का बेसिकली नेक्स्ट लेवल ऑफ, जो पहले एक रूल बेस्ड होता था कि लोग ये रिव्यू डाल रहे हैं, आप मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अब वो एआई के साथ, चैट जीपीटी के एडवांसमेंट के साथ उसके ऊपर बना के सजेशंस दे देता है करेक्ट, कि आप, अच्छा आप टाइप नहीं करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, आप वो स्टार डाल दो और इनमें से कोई एक चूज कर लो जो आपको करेक्ट, फिट होता है और डाल जो दो. लगता है करेक्ट. राइट. So this is examples real life of how this world is evolving. सो अभी लेट्स टॉक अबाउट ट्रेनिंग एंड देन लेट्स टॉक अबाउट मेट्रिक्स. Sure. तो ट्रेनिंग पर एंड मैं इस पर ज्यादा टेक्निकल नहीं बनूंगा. I'll try and keep it a little simple, श्योर. right? And the engineers who are watching this or engineering world se jo hain, it's, for them it'll be a little easier to consume because this is a lot of work they do maybe on a daily basis also. But training par main, you need to understand that there are stages. There is manual training, right? What is manual training? कि आप जो रूल बेस समझो आप बिल्ड कर रहे हो, आप पहले 1000 ऑब्जर्वेशंस लेके उन पर आप एक क्लासिफिकेशन डालोगे. क्लासिफिकेशन माने कैन बी समथिंग एज सिंपल एज अ बाइनरी 1-0, 1 equal to it, rule is correct, rule is incorrect. जीरो Right? मीन्स इनकरेक्ट, वन इज 0 नॉट means करेक्ट. incorrect, 1 means correct. मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इसमें. समझिए आप रिव्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये रिव्यू सारे पैरामीटर्स जो हमने रूल्स बनाए हैं वो पास होता है या नहीं. ये रिव्यू कोई भी एक पैरामीटर में रिजेक्ट हो रहा है तो 0. एंड ये मैन्युअली कर सकते हैं. एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज 2-3 रीजंस. It helps you understand the data that you have. And when you do it yourself at a first stage of manual, और उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब आप ये ऑटोमेट करना शुरू करोगे, you need to keep retraining. Retraining is a very, very important word in the training phase. It is not कि एक बार मैंने कर दिया और वो हो गया. करेक्ट. Even the best algorithms, and I'm saying rule based नहीं, समझो आप क्लस्टर मॉडल भी ले लो जो बहुत एडवांस हो गया है, 3 साल से चल रहा है, अगर आप उसका रीट्रेनिंग नहीं करोगे तो वो डेटा आउटडेटेड होते जाएगा. I'll give you an example. अगर नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन जो आपको देता है आपके रीसेंट बिहेवियर को इनटेक करके वापस आउटपुट नहीं देगा तो फिर आपके रिकमेंडेशंस पुराने आएंगे. करेक्ट. एंड वो रीट्रेनिंग इनिशियली मैनुअल होता है. आस्ते आस्ते एज यू डेवलप द प्लेटफॉर्म इट बिकम्स ऑटोमेटेड. एंड ऑटोमेटेड मीनिंग यू कैन डू ए verification, which is important. Maybe once a month the data science and the product manager does a random test कि भाई मेरा, मैं सैंपल निकाल लेता हूं 1000 ऑब्जर्वेशन का, उसके क्या आउटपुट्स हुए हैं, वो करेक्ट है नहीं है, क्या है, एक्यूरेसी कितना मिल रहा है मेरे को, एंड आई विल गेट इनटू द मैट्रिक्स एंड व्हाट इट मींस. बट दैट इज वेरी बेसिक, राइट? सो एक है मैनुअल ट्रेनिंग, एक है ऑटोमेटेड ट्रेनिंग, और ये होता है जब आपका प्लेटफॉर्म थोड़ा इवॉल्व हो गया है, आपकी टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर सकती है, आपका डेटा पाइपलाइन जो हम बोलते हैं कि वो कैसे फ्लो हो रहा है, कहां से आ रहा है, वो डेटा का हाइजीन कैसा है, all of these things become very important when you move from manual training to automated, right? And we're not going to deep dive into all of these difficult terms, but just high level mein aapko bata raha hu and read. So Talvinder, any additional inputs please give. नहीं, आई थिंक रीट्रेनिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू एडेड कि रीट्रेनिंग
इनफैक्ट आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। अभी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो गया, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक चीज होती है, एक दोनों बहुत भारी वर्ड्स हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसा साउंड करता है कि पता नहीं क्या ही कर रहे हो आप। उसी का भाई बंधु है लीनियर रिग्रेशन। सो लीनियर रिग्रेशन होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, देन डिसीजन ट्रीज होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ये सब अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग की मॉडल्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, इट अलाउज यू टू, एक सिलिकॉन वैली करके एक शो आता था पहले। उसमें एक बहुत ही फनी सा एक सीन होता है जिसमें कि द इंजीनियर बिल्ड्स जस्ट एन ऐप विच विल टेल यू बाय लुकिंग एट अ फोटो कि ये हॉट डॉग है कि नहीं है। दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करता है वो। राइट, वो फनी थोड़ा सा बनाया गया था कि व्हाई डू यू नीड एन ऐप फॉर दैट। बट एक्चुअली उस ऐप के लिए उन्होंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही किया था, और वही मॉडल ट्रेन किया गया था कि गिवन अ बंच ऑफ फोटोज, पहले ट्रेन किया गया था कि भाई ये सारी फोटोज हैं, ये फोटोज के अंदर हॉट डॉग है और ये फोटोज के अंदर हॉट डॉग नहीं है। और फिर इसको ट्रेन कर करके अभी क्या होगा कि कुछ फोटोज में तो बहुत क्लियरली हॉट डॉग दिख रहा है, राइट, और कुछ फोटोज में नहीं दिख रहा होगा। एंड दैट इज हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन हैपेंस। ये तो मैंने फनी एग्जांपल दे दिया, लेकिन एक्चुअली अगर आप गूगल फोटोज यूज करते हो, जो कि शायद आप करते होगे, उसमें पूछता है कि ये जो फोटो का ये जो पर्सन है, ये तुम हो कि नहीं हो। वो क्या कर Yep, रहा है, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही कर रहा है। yep. तो यही कर रहा है कि भाई इन सारी फोटोज में से हु आर द की फेसेस दैट आई एम ऑब्जर्विंग। ओके, ये फेसेस हैं, अभी कुछ फोटोज में मुझे नहीं दिख रहे हैं फेसेस, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि फेसेस कैसे हैं। एंड देन आपसे पूछता है कि बताओ कि यस और नो। वो आप क्या कर, जब आप यस और नो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। अब वो रीट्रेन कर रहे हो गूगल फोटोज के मॉडल को कि भाई ये इंसान तुमने गलत पहचाना, ये मैं नहीं हूँ, कोई और है। एंड दैट हेल्प्स इन रीट्रेनिंग। ओके, मेरी Absolutely, मेरी absolutely. कहानी समाप्त। यू कंटिन्यू। This is what you mentioned is I think, a great example of uh, how important it is to break these pieces down, right? एंड एज ए Uh, पीएम, सॉरी, एज ए पीएम ना, ये अगर आप, आपको ये सारा पूरा पाइपलाइन पता है कि कैसे काम करता है ये सब hmm, चीजें, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस के अंदर में इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो बहुत स्मार्टली, जैसे गूगल फोटोज ने कर रखा है। मैं इस पर एक चीज ऐड करूंगा, पीएम से एक और चीज बहुत होगा आपकी तरफ से, बिकॉज देखिए, आप फ्रंट फ्रंट हो, डेटा साइंस टीम, इंजीनियर्स वगैरह बैक एंड। अगर कुछ ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है या कोई सडन ड्रॉप आया है, जो हम बोलते हैं आरसीए करना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है, हम्म। ये कौन लीड करता है? ये पीएम लीड करता है। अगर पीएम ही नहीं समझ पा रहा कि ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, करेक्ट। तो ये मुश्किल हो जाती है। एक तो ये, दूसरा, वेरी ऑफन बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन द मॉडल, हम्म। आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट का डिफरेंस दिख सकता है, जो बिजनेस के प्रॉफिट में हेल्प कर सकता है। करेक्ट। मगर वो जब तक आप समझोगे नहीं, आरसी नहीं करोगे, रूट कॉज एनालिसिस, नॉट जस्ट फॉर कि कोई प्रॉब्लम हुआ है, बट इवन रूट कॉज टू फिगर आउट कि गैप्स कहाँ हैं। हम्म। वो अगर गैप्स आप फिल करना शुरू करोगे, आपको कभी कभी सडन जंप्स दिखने लगे। सो आई जस्ट वांट टू ऐड दैट, बिकॉज एक्सपीरियंस में जो रहा है कि हम बहुत बहुत भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्ड हो गया है, ठीक चल रहा है, मगर वो गैप्स क्या हैं वो देखेंगे, अभी कुछ नया बिल्ड करते हैं। सारा करेक्ट। टाइम नया मत बिल्ड करो, जो है उसको इम्प्रूव करो, वो करेक्ट। बहुत। वो दिमाग में रखना जरूरी है कि अगर महीने में 4 हफ्ते हैं, अगर हाँ, क्या होता ही है, 4 हफ्ते हैं, तो आप अगर 3 हफ्ता बना रहे हो, एक हफ्ता सिर्फ ना इम्प्रूव करो। थोड़ा बैलेंस करके चलो तो बेटर रहेगा। ऑफकोर्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ, सॉरी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कंपनी, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट में कहीं पे आपको सिर्फ बिल्ड ही करना पड़ेगा, बिकॉज आपको बहुत कुछ बिल्ड करना है, राइट। जो कि टिपिकली स्टार्टिंग फेज होता है, जहाँ आपको बहुत सारी चीजें बिल्ड करनी है टू फाइंड आउट कि व्हाट इज गोइंग टू वर्क। एंड लेटर स्टेजेस में आपको मेंटेन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई जो बनाया है सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रही है।
and that's मोटा मोटी how things go. Yes, go on, Amar. Just coming to metrics, I just want to थोड़ा अपने माइंड में फॉर द जनता, इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एज पीएम्स, सेपरेट करिएगा आउटपुट और आउटकम. ठीक है. आउटपुट इज आपके मॉडल कैसा चल रहा. आउटकम इज कि बिजनेस को क्या इफेक्ट हो रहा है. ये दोनों चीजें हाथ हैंड इन हैंड जाती हैं. ये प्लीज मत भूलिएगा कि मेरे को एक चीज हो गया तो दूसरा क्या हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. दोनों हाथ एक साथ ही आगे बढ़ सकते हैं इस मामले में. करेक्ट. ठीक है. द अदर थिंग्स इन मेट्रिक्स जो आपको बहुत ऑफन सुनने मिलेगा जब आप इसमें थोड़ा घुसेंगे, वो है एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल. अब ये क्या है? तलविंदर, यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन. मैंने एक इमेज मीडियम से एक ब्लॉग से लिया है. राइट. ये बहुत ही ब्यूटिफुली आपको समझा देता है. इफ यू गो टू द लेफ्ट. हाँ सॉरी, एक सेकंड, मैं इसी को ले जाता हूँ. ठीक है. प्रिसिजन आपके एंड गोइंग बैक टू फॉर्मूलाज वगैरह, दिस इज वेरी सिंपल वर्जन. ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हिंदी में बताइए. तो आपका प्रिसिजन क्या होता है? वो है आपका ट्रू पॉजिटिव बाय एक्चुअल रिजल्ट्स. माने क्या? आपने मॉडल एक बिल्ड किया. ठीक है. आपका ट्रू पॉजिटिव क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव वो होता है कि आपके मॉडल ने बोला कि मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं, उसने वही प्रिडिक्ट किया और आपके चेक करने पर एकदम चेक मार्क है कि प्रिडिक्ट करेक्टली हुआ है. सो ट्रू पॉजिटिव हिंदी में बोले तो करेक्ट प्रेडिक्शन. करेक्ट प्रिडिक्शन. सो प्रिसिशन हो गया करेक्ट प्रेडिक्शन ओवर कितने रिजल्ट्स, टोटल कितने रिजल्ट्स, कितने प्रेडिक्शंस किए थे, है ना, कितने प्रेडिक्शन किए, वो बॉटम है, डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर में है उनमें से कितने करेक्ट प्रेडिक्शंस. करेक्ट प्रिडिक्शंस. और करेक्ट कैसे कैसे पता चलेगा? बाय मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग. ऑटोमेटेड टेस्टिंग. ठीक है. राइट. Most companies, especially startups, it has to be manual testing. It's very difficult to do it in an automated way. In larger startups, larger companies, as your platform बढ़ जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, आपका एक पूरा ML का एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन ML फ्लो करके एक सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स, जो काफी यूज होता है फॉर ऑल ऑफ दिस, लाइक फॉर मैनेजिंग दिस एंटायर प्रोसेस. ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ. एक्चुअल रिजल्ट्स, प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स एंड टोटल, ये क्या है? ये तीन चीजें कंफ्यूजिंग है. तो सॉरी, एक्चुअल रिजल्ट्स, प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स एंड टोटल, ये तीन डिनोमिनेटर है ना, अलग अलग. नहीं, तो एक तो है आपका ट्रू पॉजिटिव बाय एक्चुअल रिजल्ट्स, और कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस प्रिसिजन को ये लेते हैं कि ट्रू पॉजिटिव न्यूमरेटर आपका सेम रहता है, नीचे में वो ट्रू पॉजिटिव विच इज दिस थिंग प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स. फॉल्स पॉजिटिव्स क्या होता है? वो सारे रिजल्ट्स नहीं लेते हैं, वो सिर्फ ये दो मेट्रिक डिनोमिनेटर में डालते हैं. माने क्या? फॉल्स पॉजिटिव ये है कि सिस्टम ने बोला कि ये, समझो एक रिव्यू आया है, सिस्टम के हिसाब से ये रिव्यू ठीक है, उसने डाल दिया, मगर आपके चेक करने पर आपको दिखता है कि ये रिव्यू में अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है, या फिर रिव्यू में सिर्फ डॉट 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 दो शब्द डाल के ये लिख दिया गया है, एंड दैट इज नॉट मीटिंग योर रिक्वायरमेंट्स. सो दैट इज ऑल्सो अ फॉल्स पॉजिटिव. ओके, सो पुट सिंपली, प्रिसिशन इज कि जितने भी पॉजिटिव, सही था या गलत था वो फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम मॉडल को क्या लगा कि भाई ये सब सही है, वो सारे रिजल्ट्स को डिनोमिनेटर में रखना है, और इनमें से जो करेक्ट रिजल्ट्स हैं, कि आउट ऑफ द 100 करेक्ट प्रेडिक्शन, सिस्टम के हिसाब से करेक्ट प्रेडिक्शन से अगर उसने 100 प्रोड्यूस किए, उसमें से मान लीजिए 60 या 70 या 85 ऑफ देम वर एक्चुअली करेक्ट, तो वो 85 डिवाइडेड बाय 100 बिकम्स 85% प्रिसिशन. ठीक है. से गूगल वाले फोटोज की जो एग्जांपल दे रहा था मैं, गूगल फोटोज में अब उसने अगर मान लीजिए मुझे 100 फोटोज दिखाई, या उसने मुझे 100 फोटोज दिखाई कि इसमें मुझे लगता है आप हो, यू आर इन दीज 100 फोटोज फॉर एग्जांपल, and turns out that I was actually there in
95 ऑफ देम। तो उसके एक्यूरेसी जो है वो 95% हो गई, बिकॉज सिस्टम के हिसाब से 100 फोटोज उसको मिली थी जिसमें कि मैं हो सकता हूँ। ठीक है, जिसमें से सिर्फ ट्रू पॉजिटिव जो थी वो 95 थी, एंड देयर वर 5 व्हिच वर फॉल्स पॉजिटिव, बिकॉज उसमें मैं एक्चुअली था नहीं, लेकिन सिस्टम को लगा मैं था। हाँ, तो ये एक्यूरेसी नहीं है, ये प्रिसिजन के बारे में हाँ हाँ, ये प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ मैं। है। प्रिसिजन, या, हाँ, ठीक है, ये यस, प्रिसीजन हो गया। यस। एंड देन आता है रिकॉल। अब रिकॉल ट्रू पॉजिटिव समझ में आ गया कि ठीक है, 100 फोटोज में से 95 जो थी वो ट्रू पॉजिटिव थी। अब फॉल्स नेगेटिव क्या चीज है? अब फॉल्स नेगेटिव है फॉल्स पॉजिटिव का उल्टा, माने कि रिव्यू आपका रिजेक्ट हो गया। अच्छा, मतलब ऐसी मगर, कुछ 20 फोटोज और थी हाँ, जिसमें मैं था, लेकिन सिस्टम ने बोला हाँ, तू नहीं है। करेक्ट, अच्छा, वो मतलब वो मैं वो रब ने बना दी जोड़ी वाला शाहरुख खान हो गया, राइट? सही, सडनली, है ना, एकदम सिस्टम से, रिजेक्ट कर दी। एकदम से, समझ कि गया। भाई है बंदा, मगर मैंने बोल दिया कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिस्टम के हिसाब से ये बंदा गायब हो गया। बंदा गायब। तो जो एक्चुअल फोटोज थी मेरी वो 95 प्लस मे बी जो 20 फोटोज और थी मेरी, तो 95 प्लस द 20 हाँ विच जी, वर, जो कि फॉल्स नेगेटिव, यानी डबल नेगेशन है यहाँ पे। मतलब वो मेरी फोटोज थी 20 एक्स्ट्रा फोटोज इन द लार्जर पूल ऑफ फोटोज, बट वो मिस क्लासिफाई हो गए। करेक्ट, सो टोटल पूल ऑफ फोटोज इज 125 नाउ, या, सॉरी 120 नाउ, जिसमें मेरी फोटोज जो हैं वो 115 है। आइडियली दैट्स व्हाट इट। आइडियली यस। तो जब सिस्टम को चेक करना है तो आपको सिर्फ जो उसने प्रोड्यूस किया कि हाँ ये फोटो सही है, वो भी सिर्फ वो नहीं देखना, आपको वो भी देखनी जो जो उसने बोला कि ये तुम नहीं हो। सो दैट इज व्हाई आल्सो यू विल सी कि जो फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड पर है द फर्स्ट ऑप्शन, एंड हाँ, डिफरेंट टीम्स डिफरेंट कंपनीज यूज डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट या फॉर्म। प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स, प्रिसिजन होता है फुल एक्चुअल रिजल्ट्स पर, रिकॉल होता है प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स पर, हम्म राइट? कि प्रिडिक्शन क्या है, हम्म। प्रिडिक्शन कितनी अच्छी तरह चल रही है, सो स्पेसिफिकली प्रिडिक्शन। सो अगर मैं इसको थोड़ा हिंदी में बताऊं तो प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स मतलब कि अगर मान लीजिए 1000 फोटोज थी, टोटल पूल जो था 1000 फोटोज का था, सिस्टम रैन एंड वाज एबल टू लेट्स से अंडरस्टैंड 500 फोटोज। यस, ठीक है, बाकी 500 फोटोज को नहीं कर पाया, उसका सिस्टम हैंग हो गया, कुछ तो हो गया, नहीं कर पाया। तो 1000 फोटोज में से 500 फोटोज को उसने एनालाइज किया एंड उसके हिसाब से सॉर्टिंग की, क्योंकि इसमें तलविंदर है, इसमें तलविंदर नहीं है, इसमें तलविंदर है, इसमें तलविंदर नहीं है, उसने। तो आपका डिनोमिनेटर वो 500 हो जाता है। करेक्ट, दैट इज अ प्रिडिक्टेड रिजल्ट, क्योंकि उसने प्रिडिक्शन किया कि कर भाई पाई, ये है कि नहीं है। एब्सोल्युटली, लेकिन इनमें से अभी अगर सिस्टम की या जो हमने मॉडल बनाया था इसकी आउटपुट जो एक्सपेक्टेड थी वो ये फोटोज बताने की कि जिसमें तलविंदर है, तो एक्चुअल रिजल्ट इस केस में हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि टेल मी द फोटोज जिसमें तलविंदर नहीं है, या फिर एक दूसरा तरीका कि टेल मी द फोटोज जिसमें कोई इंसान ही नहीं है, मुझे सिर्फ नेचर की फोटो चाहिए। राइट, तो जो भी आपका रिजल्ट, जो आपके दिमाग में रिजल्ट आपको चाहिए, दैट बिकम्स द एक्चुअल रिजल्ट। कि उसमें अब सिस्टम गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है इन मेकिंग दैट प्रेडिक्शन कि इसमें तलविंदर है, लेकिन तलविंदर नहीं, तलविंदर का भाई है या कजन ब्रदर है, जो कि सिमिलर फीचर्स हैं। दैट फॉल्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ एक्चुअल रिजल्ट। लेकिन रिकॉल में आता है कि जो 500 फोटोज थी जिसमें पूरे पे मैंने प्रोटेक्शन किया उसमें से, क्योंकि अब एक तरह से सोचो ना, इंसान रिकॉल कर रहा है, वैसे ही मशीन रिकॉल कर रही है कि तलविंदर दिखता कैसा था, या फिर नेचर होता कैसा है, या फिर इंसान कौन से होते हैं, मुझे उनको निकालना है। सो दैट इज द रिकॉल। तो प्रेडिक्ट प्रिसिशन हो गया और रिकॉल हो गया। करेक्ट, करेक्ट। ओके। एंड एक्यूरेसी सिंपल हो जाता है, आपके ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, व्हाट इज राइट? ट्रू नेगेटिव? सो ट्रू नेगेटिव ओवर हियर आपका बन जाता है बेसिकली कि फोटो डिटेक्ट हुआ कि तलविंदर नहीं है उसमें, और ये हाँ, करेक्ट डिटेक्शन। अच्छा, सो दैट इज ट्रू नेगेटिव, क्योंकि वो जो नेगेटिव उसने बोला कि तलविंदर नहीं है करेक्ट, वो सही भी था। करेक्ट, सो इन अ वे जो ये जो दो वर्ड्स में घुसा के इन लोग ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, ये जो पहला वर्ड है ट्रू इज
द मैनुअल चेकर का ट्रू और फॉल्स, और जो सेकंड वर्ड है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सिस्टम का पॉजिटिव या नेगेटिव है, मोटा मोटी। सो सिस्टम बोल रहा है पॉजिटिव है भैया, ये तलविंदर है, एंड देन द चेकर विच कुड बी मैनुअल और ऑटोमेटेड इज सेइंग कि ये ट्रू पॉजिटिव है, जो जो पॉजिटिव बोल रहा है वो ट्रू है, और फॉल्स पॉजिटिव मतलब फॉल्स, वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, गलत है, उसने गलत। पॉजिटिव नेगेटिव आप जो बोल रहे हो करेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव इज सिस्टम, हम्म। ट्रू फॉल्स इज मैनुअल तो चेकर। चेकर। अब वो सिस्टम चेकर है, मैनुअल चेकर है, जो भी है, हाँ चेकर, राइट? बढ़िया। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो एंड सो बेसिकली एक्यूरेसी की बात यहाँ पे आती है कि चाहे सिस्टम या मॉडल ने अ, मुझे प्रेडिक्ट किया कि तुम हो या तुम नहीं हो, दोनों के दोनों क्लासिफिकेशंस उसने करेक्ट किए कि नहीं किए, वो यस, एक्यूरेसी है। यस, ठीक है। सो प्रिसीजन, रिकॉल एंड एक्यूरेसी, बाय द वे ये तीन टर्म्स आपको बहुत बार आएंगे, एंड बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव एंड एक्सेट्रा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको ना अपनी भाषा में अपने आप को समझा लो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, जहां पे भी एआई की टोटली, बातें आएंगे, ये टोटली, प्रिसीजन रिकॉल एक्यूरेसी बार बार टोटली आता एग्री, है, कंफ्यूज होते रहोगे। सो टोटली एग्री। एक्यूरेसी की मॉडल कितना एक्यूरेट है, कि ये चाहे सही बोल रहा है या तुम हो नहीं हो, या ये हॉट डॉग है या नहीं है, वो एक्यूरेट है कि नहीं। और अगर आपको चाहिए था कि मुझे वही फोटोज दिखाओ जिसमें कि डॉग है, तो वो प्रिसीशन हो जाता है कि वो कितने फोटोज उसने बताई उसमें सच्ची में डॉग था, ओवर वो सारी फोटोज जिसमें कि वो सच्ची में डॉग था, प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि उसने सोचा समझा कि ये डॉग है लेकिन डॉग नहीं था, झाड़ू था। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, दैट इज प्रिसीजन। एंड रिकॉल हो गया, जितने भी इस फोटोज को उसने प्रोसेस करके बोला कि ये डॉग है इसमें डॉग नहीं है, वो सारे के सारे डिनोमिनेटर हो जाएगा, एंड न्यूमिनेटर हो जाएगा एक्चुअल फोटो जिसमें कि डॉग एक्चुअली। फुल स्टॉप, मेरी कहानी समाप्त। तो अमर, इस पर यू गो। बस मैं ये टॉप अप करूंगा जो तलविंदर ने बहुत क्लियरली समराइज कर लिया है बहुत अच्छी तरह, कि अ, आपसे एज अ पीएम पूछा जाएगा कि आप कौन सा वाला पर फोकस करें, राइट? हाँ। वेरी ऑफन दिस क्वेश्चन विल कम। देयर इज पर्सनल एक्सपीरियंस, देयर इज नो करेक्ट आंसर टू दिस, ओके? हम्म। नाउ व्हाई डू आई से दिस? बिकॉज आपका क्या यूज केस, आप किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है उसमें, उसके ऊपर फिर आप डिसाइड करोगे कि इन तीनों में से आप कौन सा फोकस करोगे। एक जनरल प्रैक्टिस जो मैंने देखा है, स्पेशली डेटा साइंटिस्ट जो भी मैं जिनके साथ इंटरेक्शन रहा है, लिमिट जो मेरा, कि दे फॉलो एक्यूरेसी एज द प्राइमरी मेट्रिक, हम्म। but they track precision and recall as secondary metrics. Why? Because जब डीप डाइव करना पड़ता है ना, आपका प्रिसीजन और रिकॉल में ही आपको डीप डाइव करना पड़ेगा हम्म। मेनली। तो ये आप जैसे अपने भाषा में जैसे तलविंदर बोल रहे थे समझ लीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स, थोड़ा ब्लॉग्स पढ़िए कि कहाँ क्या इस्तेमाल होता है, एंड देन वी कैन नो दिस थिंग। So just to take this forward and start, kind of wrapping up, model types, and I've kept model types in good to know. Why? या You need to know, you need to understand what they are, मगर आपको एज अ पीएम इन पर डिटेल्ड निटी ग्रिटी करने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, बट यू शुड नो, यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, ओके? कौन सा मॉडल क्या करता है वो थोड़ा जानना जरूरी है। यस, एब्सोल्युटली। Second thing which you should know is around biases. हम्म। अब देखिए, आई एम अ यूजर पीएम, मेनली यूजर बिहेवियर स्पेशलिस्ट, तो मेरे लिए तो बायसेस फर्स्ट सेक्शन में आ जाता है, बट जनरल प्रैक्टिस फॉर पीएम्स इज बायसेस में वो इतना नहीं घुसते हैं। दे हम्म। वर्क विद द डेटा साइंटिस्ट टू इंश्योर दैट दीज बायसेस आर नॉट हैपनिंग, एंड आई हैव लिस्टेड ओनली 3, but there are many more. मैनी ऑफ देम, करेक्ट। The third piece, which is something which, depending on the level of which you are as a PM, APM, PM, SPM, GPM, वगैरह वगैरह, and the kind of organization you are working in, the country you are working in, it becomes more important, right? Which is कि privacy laws क्या हैं,
आप डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, एथिकल कंसिडरेशंस क्या हो जाती हैं, माने जैसे आप ये इमेज रिकग्निशन अगर है तो आप किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो आप एथिकली कर पा रहे हो या नहीं, ये बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज एन इमेज it can completely ruin the company, depending where करेक्ट. you're. It is not something which you may say मेरे मॉडल में कोई इशू है, but if you don't keep this into account, it can create biases and it can also create a lot of external PR related, company brand related issues. करेक्ट. तो आपका नॉलेज इन चीजों में होना चाहिए, बट जो आपका डेली काम रहेगा वो ये फर्स्ट सेक्शन में. एब्सोल्युटली मेक सेंस. इसमें इतनी बातें हैं ना अनपैक करने के लिए कि मतलब हम लोग महीना भर बात कर सकते हैं और वो फिर भी कम पड़ेगा. बट आई होप दिस सेशन हेल्प यू गेट अ लिटिल बेटर आइडिया ऑफ कि ये सब टर्म्स जो हम लोग यूज करते रहते हैं इसका मतलब क्या है. there's lot more to deep dive, but I think this should give you a head start so that अगर आप खुद रिसर्च करना शुरू करो आपको कुछ मिल जाएगा. Absolutely, absolutely. I hope this was helpful. It is very very high level कि AI में आप एज अ PM क्या करोगे, क्या टर्म्स हैं, बट खुद पढ़िए, जो सवाल हैं यही वाले यूट्यूब चैनल पर, यही वाले वीडियो के ऊपर डालिए. We'll respond. If you need more बिल्कुल. sessions, we're there to help you. So look forward to interacting with everybody watching. बिल्कुल एआई का दुनिया ना नॉर्मल दुनिया होने वाली. जैसे आप एचटीएमएल करते थे 20 साल पहले, फिर अभी रिएक्ट नेटिव के एप्स बनाते हैं, वैसे अभी एआई बनाना नॉर्मलाइज हो जाएगा. हर कोई यही करने वाला है. सो प्लीज पढ़ना शुरू कर लीजिए बिफोर इट बिकम्स टू लेट. So use AI before it uses you. Don't be afraid कि jobs चली जाएंगी वगैरह वगैरह. Just learn. करेक्ट. Only thing, no matter what age you are, learn, see how you can use AI. करेक्ट. And honestly, that is what the world of today is. Don't get sidelined by it. या